Yeah, it's a little early. Yes, yes. So we are live on YouTube as well. Great, madam. Yeah. So we will be sharing the link of live session here in the in-call messages in chat. Later we will start recording also, no, madam? Yes, we will record. We will record it. Yes, sir. Yes, Assalamu we are alaikum, ready. Ashraf Sahab. Ashraf Sahab has also joined us. Yes. तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने टाइम से पहले ज्वाइन किया है. And we value your time, but like we need to wait. थोड़ा सा इंतजार करना है बाकी लोगों को ज्वाइन करने के लिए, because we gave the time of 6:30 and 5 मिनट की विंडो देनी ही होती है लोगों को ज्वाइन करने के लिए. So I will request all of you people to bear with us. Yes, Machine, are you saying something? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Yeah, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. दानिश साहब, मेरी आवाज सही है? जी जी बिल्कुल सही है सर, लाउड एंड क्लियर. ओके, थैंक यू. तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है? हर एक से 3,000 में 3 चीजें मंगा के उन्हें दे दो. सैंडविच मेकर, स्टीम प्रेस. तुम अलग से कुछ भेजो, इलेक्ट्रिक. तुम अलग से कुछ दो उनको. वो जो दिया वो दिया. I तू will नहीं दे request सकते. people to keep their privacy to themselves. आप जब को आपको हमसे बात करनी हो तो आप अनम्यूट करिए, otherwise keep yourself on mute. Sir, I'm unable to mute and unmute. You are not able to. Now you're doing it. Good, excellent. No, sir. I think I don't have the host control. Oh, you? Miss Yes. Nido- Oh, Arzu ne le no, liya no, hoga no. aapse Miss control. Nilofer is host now. Yeah. How come she's host? Miss Nilofer, can you transfer the host control? Meanwhile, others join. Please, write your institution name, your name. Miss in the Arzu, can you in-call guide messages. me, please? Yeah, you click Yes, on the sir. 3 dots which is there on the Skin Ma'am's screen, right? Okay. Click on that. Yeah. Now, do you see the option of making the person host? Yeah, right. Yeah.
transfer it. Thank you. Yes, done. Thank you. Tasin ma'am, please check. Yeah, it's been done. अस्सलाम वालेकुम जावेद सर। कैसे हैं अजहर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जावेद सर, ग्रेटफुल। Thank you. Thank you for your patience, all of you. People are still joining. Just wait for a few more minutes, then we will start. Assalamu alaikum, sir. अशरफ भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। दानिश भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? Alhamdulillah, alhamdulillah. We will start in just a few minutes. We are waiting for other people to join. Brother Javed, how are you? I'm doing good. आप कैसे हैं? Alhamdulillah. Where are you So, right now, Tasneem, Anwar? thank you very much for adding. So Yes, Anwar, are you where in Qatar? I'm in Qatar now. Yes. Okay. You know, if you have any friends in Bangladesh, I should meet. I would like to do that. I'm going there next week to Dhaka. Really? Okay. Yeah. So I will get you connected to some people. Sure. Right. For how many days you are going there? For 4 days. Will you be staying in Dhaka mostly, or you are plan of traveling any place? I think only in Dhaka, maybe, I mean, I'm not sure. I'll be staying with some friends there, rather relatives, and, coming back. So I can get you visit some of the camps also if you are interested in. There are camps of Urdu speaking people in Dhaka. They are in those camps. These people were affluent people in the society before 1971, and then there was war. So Yeah. there was devastating effect. So there are भेजिए, camps in Mirpur, in Mohammadpur. I would I'll get certainly you like to connect to local Bangladeshi institutions that will be able to accept our educational help. So if you have that, Inshallah, I will get you connected to them. Yeah. Thank you, Anwar Sahab, for joining on in short notice. Thank you for inviting me. Such a pleasure and honor for me. Thank you, everybody, for your patience. I would like to know your name and where are you from in the chat box. If it is possible, please write down your names and where are you from in the chat box, please. Thank you so much. We will be starting in a minute. And of course, with your contact number also. Right, that would be very helpful. And it's obviously Maghrib time over here. Maybe most of the participants are from Karnataka. Maybe they'll join in 5 minutes. So meanwhile, Mubashira, why don't we see a testimonial over here?
Are you here with us, Mubashira? Yes, ma'am. Okay, Surely. thank you. Let me share the video. One moment, please. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं जामिया आयशा निस्वान से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर माशाअल्लाह रोज़ाना बिगिनर्स के लिए जो 1 घंटे की क्लास निया की जानिब से चल रही है, अभी ये इब्तदाई महीना है। माशाअल्लाह इसके अंदर जितनी तालिबात ने शिरकत की है, ये लोग काफ़ी इसमें फ़ायदा महसूस कर रही हैं। ये लोगों का कहना ये है कि हम अगर बराबर इसके अंदर शिरकत करें तो हमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हमें लिखने के अंदर भी मदद मिल रही है, बोलने के अंदर भी मदद मिल रही है। तो हमारे जामिया आयशा निस्वान की इंतज़ामिया की जानिब से इस क्लास के बारे में जब ये इत्तला मिली, बच्चियाँ मुतमईन हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये क्लास बराबर जारी रहे। इस सिलसिले में निया वालों की तरफ से जो भी अहकाम आएंगे इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Thank you, Mubashira. So shall we start? Let Harry or through that Harry, let us have some more introductions here, some new faces, some of the guests that we invited. We have Mr. Dev Kumar, जिसे हम last week miss करे, and we also have Mr. Rashid Harunor, जो इससे पहले हमारे contact में थे. We lost touch. We can maybe ask them to just give a 1-minute talk. Rashid bhai, you want to say something about yourself? It's been a very long time. I think maybe they are about to pray. Dev Kumar से बात करिए. Maybe we can hear him out. Yeah, Mr. Dev Kumar. Mr. Dev Kumar, are you there? Okay. Hello. Yes. Hello, sir. How are you? Fine, sir. Alhamdulillah. Great. Mr. Dev Kumar, I believe, is facing some problem with the audio. Okay. Okay. Shabin, how are you? Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Yeah, great, great. To be here. You have a unique program that we would like to hear from you. Yeah, sure. Hope it will be helpful and beneficial to all. Absolutely. I mean, special education is a very underserved area, and it needs to be given more publicity. It is a hidden challenge. But the thing is, all the people that we are working with, all the marginalized,
they are all special. They are special because they are all neglected. You know? Exactly. So it's a very huge, wide audience here that's really needs help. And as such, you know, they deserve a lot of help, and they are also special for us. Shabin, you want to come on this talk and then tell us something about yourself? You know, we do have a few minutes before we can start. Has everybody joined so that, like, you know, I don't want anybody to miss on it. Okay, and then probably we'll have to wait for a little while. Maybe somebody is new to it and, you know, are facing challenges and not able to, may need some guidance. Okay, we can hold on for a little while. Yeah. Yeah, I think another 2 minutes. Let's start. Ashraf bhai is here, or he's not here? Ashraf Saab is here. Yes, Assalamu alaikum, I'm here. Walaikum salam. Is this your monthly meeting or like a quarterly meeting or something else? You know, Anwar, this specific meeting that we have is basically focused on Karnataka, the state of Karnataka, because, you know, we had the pleasure of visiting last month and then developed some relationship with many of the organizations there. So we are trying to nourish that relationship, tell them what we are doing and stuff like that. But it's also open to the wider audience. Wonderful, great. So you will see most of the attendees here would be from Karnataka, hopefully. I see there are some also from Bihar, mashallah, and other places. Yeah, yeah. Is from Bihar, and you know. Here, actually, we are reaching out to different states of India, and we are getting collaborators from different states. So they are joining us from different places. But this event, we have focused for the people of Karnataka to make them aware that what we are doing, what we are offering, and the method with which we are offering, the courses which we are offering, right? We want people to be aware that what NEIEA is doing. Chaliye bhai, I think it's time to get going. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. जी, मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूंगी, आपकी अगर इजाजत हो तो. Okay, Miss Atia from our classes. Yeah, madam. Okay, yeah, sure. Why not? जी जी. तो आप please come on the camera, ma'am. That if you're comfortable. No, ma'am. It's okay. मैं I think comfortable हूँ जी वैसे. तो मैं जी. एक हो गया ठीक है. Please, others, please be on mute. We request you, please be on mute if you're not talking. Thank you so much. Please be on mute. Thank you. Yes, go ahead, Miss Atia ji. जी मैम, मैं बिगिनर्स क्लास ज्वाइन करी थी लास्ट ईयर. तो हमारा कोर्स मार्च में खत्म हो गया था. अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स बहुत अच्छा रहा, और हमारे मेंटर आप तस्कीन तरन्नुम साहिबा थे, जो बहुत पेशेंसी के साथ हमको बहुत अच्छे तरीके से सिखाए. कन्वर्सेशन के जरिए हम सीख सके. ग्रामर से हम डर रहे थे कि ग्रामर अगर नहीं आया तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, मगर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बता के जो कन्वर्सेशन दिए, क्लास में हमारे को बोलने का मौका दिए, और जो नई टेक्नोलॉजी हमारे को बताए, गूगल डॉक्स, गूगल क्लासरूम, इससे हम लोग बहुत दूर थे. आज के जमाने के साथ चलना बोले तो ये तमाम चीजें हमारे लिए जरूरी थे,
तो आपकी जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। और इस टीम को, पूरे टीम को मैं काबिल मुबारकबाद है कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इसमें हर किस्म का कोर्स, हर उम्र के लोग इसमें ज्वाइन हो गए हैं और अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने अपने टाइम के हिसाब से जब भी उन लोगों को टाइम मिला, शाम में, सुबह में, आप लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम तस्कीन तरन्नुम साहबा सुबह 6 बजे आ जाती थी, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो हमारे साथ रहती थी ना, तो ये हमारे लिए भूलना नामुमकिन है कि उन्होंने हमारे को बेहतरीन तरीके से जो सिखाया। तो उसके बाद से मुझे जब भी मीटिंग रही, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मैं बात नहीं कर सकी। आज मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैं ये बात सामने रखना चाहूंगी कि आप लोग बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। हमारे इसमें है ना, एक हुर्फ अगर किसी हमारी वजह से कोई सीखे तो उसके लिए 10 नेकियां है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम काबिल मुबारकबाद है, सबको कंग्रेचुलेशंस करती हूँ। और अल्लाह ताला और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और तरक्की अता फरमाए, और ऐसे काम करें और बहुत से लोग आपसे जुड़ जाएं। मैं अपने कलीग्स में भी बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स में भी बताती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन लोगों के कोर्सेज चलते हैं। तो जी, बस ये बात बोलना था। और मैं परसों टेक्निकल कोर्स मेरे को लेट मालूम हुआ तो लेट ज्वाइन करी थी, मगर आरजू मैम भी बहुत अच्छी तरीके से समझाती मेरे को। स्टार्टिंग से मैं नहीं सुनने से क्या हुआ, मेरे को मैं छोड़ देना पड़ा। इंशाल्लाह फिर जब भी ये कोर्स शुरू होगा तो मैं ज्वाइन करूंगी। मैम, इतना टाइम आप मेरे को दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कि थैंक मैं यू। अपना जस्ट वी हैव काम स्टार्टेड। करती हूँ। अतिया जी, आज ही स्टार्ट हुआ है टेक्निकल कोर्स, प्लीज ज्वाइन 10 AM। अच्छा जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम। I was not थैंक No, expecting it's so much. 7 p.m. ma'am. 7 p.m. PM, okay, 7 PM. ओके, थैंक यू। Miss Arushi, thank you so much for your kind words. You know, we were not expecting in the beginning itself the testimonial, right? So you joined. Thank you so much. That is the kick start for this event. Over to you, Mr. Azhar sir. Assalamu alaikum. Good evening. What a great start for our meeting. The testimony by Miss Satya, I think, has set the frame for all of us to begin this meeting. And more than it is always, there is a saying, the taste of the pudding is in eating. So I think Atiya ji has eaten the pudding which we have prepared, and it has come out very well. And therefore we hope that we would continue this noble task under the able leadership of Javed Mirza Saab, who has brought us all together here on this platform. Okay, I recall our initial meetings of 2020, 2021, just out of the COVID. It was all in the abstract stages, where we were all thinking how best we can go, what are all the different means to reach out to the poorest of the poor. So therefore, the mission of Javed Mirza Saab was to empower those who do not have anything at their disposal. Okay, rather than just talking about already those who are in school or those who have resources and other amenities. So in this regard, I believe the efforts have found merit so far with our endeavors, and inshallah hope so with all of us coming together and putting our hands and minds and souls together, many things can be achieved. Thank you. With that note, today I would like to begin this program. So as Javed Saab has rightly pointed out, of course, this program today is meant mostly for the Karnataka audience, but again, not limited to Karnataka audience. So therefore, the title what we have decided to give was Education for All, and NEIEA, which stands for New Equitable and Innovative Educational Association. And the prime objective of the meeting is to try to understand and seek a disruptive educational model seeking to transform education. So in this regard, okay, we'll try to discuss here what are the various pedagogies, or particularly the DOP, what we refer to as Discourse Oriented Pedagogy, how NEIEA advocates in using this pedagogy approach, and as well as going beyond the traditional form of understanding and integrating mostly online teaching but also on-site teaching as well. Apart from that, there is a vision of NEIEA that you would like to teach teachers training on everyday basis,
I think COVID has pushed us, all of us, to test our, knowledge and ingenuity with regard to online teaching and education. And also, very importantly, making education inclusive. And on top of that, more than inclusive, additionally is free, because we do not charge, any amount from any of our students. All we seek is from either madrasas or educational institutions or schools or any organizations to set up some basic structure within their own, and provide us some basic amenities to go ahead with it. And the target group are marginalized children, of course. And very importantly, also, we try to have our time scale, as in one of the testimony by Miss Satya pointed out, right from morning 6 a.m. till evening 10 a.m. also. Okay, we do offer live classes, and as well as it's not just only on Monday to Friday, but even weekends also we do have classes. And very importantly, we use these technologies right now, as we are using the Zoom platform, okay, Zoom technology. And before that, we also used MS Teams for some times. And small introductory note, I would like to, hand over now the, moderate session to Mr. Skin. Okay, Mr. Skin, over to you. Thank you. Thank you so much for that, sir. Let me introduce myself. My name is Taskin Tarannum. I am the Deputy Supervisor over here. So I will be host and joined by Azhar sir from Bangalore. Okay. So let us now, our journey begins with a reflection on the current state of Muslim education. Let's give a round of applause to Ashraf Shah Sahab, based in Bhagalpur, Bihar. Ashraf Shah Sahab is the founder of BESCO, an NGO dedicated to uplifting slums through educational empowerment. So today he will be sharing a presentation about the education of Muslims in India. Over to you, Ashraf Sahab. Thank you, Taskin. Jazakallah khair. I can share my screen. Yes, sir. Yes, sir, you can. Yeah, you can see my screen now. Yes, sir, we can see. Shall I go ahead now? Visible. Yes, sir. The slide bar is there with the pictures of the this. You can adjust it. Yeah, you can yourself adjust, sir. You can just drag it to any corner of the screen so that it won't disturb you and This it is won't okay? be. Yeah, okay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, NEIEA. In fact, I have been involved with NEIEA for the last 3-4 years. However, we are from BESCO, Bhagalpur. Bismillahirrahmanirrahim. You see, the thing is, we are the Ummah, and the first wahi on our Prophet was Iqra Bismi Rabbi. Is पढ़ो अल्लाह का नाम लेकर के, यानी इस उम्मत के जो लोग हैं, यानी जिनको कहा गया पढ़ो. और एक वक्त था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुद कह रहा दुआ करो. क्या दुआ करें? तो सूरह ताहा में रब्बी जिदनी इल्मन, ए मेरा रब मेरे इल्म में इजाफा कर, यानी इतनी इंपॉर्टेंस है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेयर वी आर in the education system, this is I'm going to highlight in next 5 to 7 minutes. The slide is not moving. Yeah. You see, I have taken my first slide, which is from the Niti Aayog. And this slide shows that what is the percentage of people in different states who are below the poverty line. And you can see that Bihar is almost 52% people are below the poverty line. And compared to that, if you go down, you find Karnataka, Telangana, or even Andhra, Tamil Nadu, Kerala. You see, in Kerala, almost 98-99% literacy is there. And that is the reason hardly 1% people are below poverty line. So it means educational backwardness leads to economical backwardness. And this is a fact. And this graph also gives us some direction where we have to focus more.
You see, if we see that because we belong, people complain, minority, this, that, even as per the census 2011, there are different minorities are there. And if we say Muslims, it's more than 14%. But then when it comes for our literacy level, the gap is highlighted here. This is also census 2011. The national average is almost 73%. All the different minorities are way ahead compared to the national average. But unfortunately, Muslims are much below than the national average. We remember, and it was in 2006, that the government of India has come out with such a committee report. Now it is almost 17 years. It is high time that we should try to give a look where we stand, whether we are improving, whether we are further going down. It is, and in this regard, recently, few months back, there was a report from Mr. Arun Mehta ji, where he has come out a detailed report highlighting state of Muslim education in India. And I consider it's an eye-opener. And when he come out with his... You see, you can hear me? Yes, sir. Yes, now. Yeah. So Yes, when he we can come out hear with this report, then there were different leading newspapers which were giving the coverage on this report. And one of the leading newspaper, Hindu, they write, Muslim students' strength in higher education fell by 1.79 lakhs in 2021. I mean, this is the things, and it means this is confirming that where we are heading. And I have taken some of the slides, which is yeah, some of the slides. I have taken some of the slides which are from the same report from Mr. Mehta, and this shows the enrollments at different level. And if you compare from 12-13 with 21-22, unfortunately, we are down. Right to education is there, but then the enrollment is also going down. And the most, the pathetic case is that hardly 50% are getting enrolled in the primary, but when it moves to upper primary, it becomes half. Then to secondary, it goes further down. It's too much. And then in the higher secondary, it is in single digit. And if you talk about the quantum or the number of dropouts, it is in lakhs and crores. And it gives the figure in boys and girls at different levels. The whole big chunk of generation is going, without education, it is too much. And that is the reason when we talk about the higher education, that is the people when they are after 12th, when they are for the graduation, how many people are going for ITI, how much people are going for different types of certificates and diploma. This is the figure. And this is 4 point something. This is too much. This says that there is something is wrong. And that is the reason, when we talk about this is one of the report from Aishi in 2021, which gives on the left-hand side, you can see in the higher education, what is the percentage of Muslim. But even, OBC, scheduled caste, scheduled tribe, you see where they are. And that is the reason on the right-hand side, I have just mentioned that for the medical entrance, that is the NEET, top 50 candidates, there was only one candidate from the Muslims. If you talk about the UPSC exam, the recent one, out of 993 candidates, only 29 were Muslim, not even 3%. I mean, this says that when you are in higher education in the college, for 4%, how you will be 14% in UPSC? So where are we? If we are not there, then where are we? Let us have a quick look. I'm very sorry. Please
and forgive me, but this is a fact. This is from the newspaper, and this shares that 40 to 50% यानी फ्लैश ट्रेड में है, यानी प्रोस्टिट्यूशन में, भले नाम बदल करके हैं. इट्स वेरी वेरी पैथेटिक. हम कहाँ हैं? हमारी पॉपुलेशन अभी देखा सेंसस के हिसाब से 14 पॉइंट समथिंग, लेकिन जब जेलों की बात आती है, वी आर डबल द पॉपुलेशन इन द जेल, मोर देन 30% डिटेनीज. और जब बात आती है अंडर ट्रायल्स की, तो 55% अंडर ट्रायल्स आर मुस्लिम्स. दीज आर ऑल डिफरेंट न्यूज़पेपर आई एम साइटिंग. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूज़पेपर. Every fourth persons are beggar, भिखारी है, and out of that 30% are Muslim. हमारा ट्रेड क्या है, प्रोफेशन क्या है? दिस इज, कहीं पे हम पान बेच रहे हैं, कहीं हम जो है रिक्शा चला रहे हैं, कहीं स्ट्रीट वेंडर हैं, कहीं हम लेबर का काम कर रहे हैं. माय गुडनेस. मैं एक रिपोर्ट देख रहा, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, एंड देयर जस्ट फ्रॉम क्लास 8 to 9 more than 33% children were drop out. What was the reason behind it? कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है. तो जब बात आती है कि भाई यानी कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जहां हमारी आबादी ज्यादा है, वहां स्कूल नहीं है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, इवन मदरसा. और अगर है भी, तो जितने टीचर होने चाहिए उतने नहीं है. और जो भी थोड़े बहुत हैं, तो वो ट्रेंड और क्वालिफाइड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. इवन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है. विद दैट रीजन, जहां हमारी जो बच्चियां जो है, लड़कियां 5वीं 7वीं क्लास में आई, पेरेंट्स डर जाते हैं, नहीं भाई हालात अच्छे नहीं है, जमाना खराब है, और कोई एजुकेशन है, घर में बैठो. वहां तो लड़कियों के लिए टॉयलेट तक अलग नहीं है. इन तमाम ये जो चैलेंजेस हुए, दिस इज लीडिंग टू दिस टाइप ऑफ ड्रॉप आउट. दिस वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम. ये कुछ याद आया आपको? हमने पहले ही जो स्लाइड में देखा था, Sir, you are on mute, sir. Kindly unmute yourself. Yeah, that's okay. Yes. Okay. तो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था एजुकेशनल बैकवर्डनेस लीड्स टू इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस. यहां मैं ऐड कर रहा हूं विच अफेक्ट्स द अदर सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स. Just doing it like Ashraf sir, you have again gone on mute. Ashraf sir? Hello, you can hear me now? Yes. Yes. Sorry, yani. Ashraf sir, So, can you please repeat your 2 sentences before? Okay. यानी in this slide, you see, I wanted to highlight that पहली स्लाइड में जो मैंने बताया था एजुकेशनल बैकवर्डनेस लीड्स टू इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, यहाँ मैंने ऐड किया है which affects other socio-political factors that shape the current situation of Muslim in India, which leads unemployment or ghettoism. और ये है, तो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो कौन करेगा? ये नेक्स्ट स्लाइड नहीं जा रही है. I cannot move my slide. Yes, thank you. So the choice is yours. Yani, we have 2 options: make progress or make excuse. अब बात आती है कि भाई ठीक है, अगर ऐसी है तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? अभी आपने देखा ही था कि भाई कुछ दिन पहले ही जो है मौलाना आजाद एजुकेशनल फेलोशिप जो था फॉर हायर स्टडीज, वो भी बंद कर दिया गया है. तो जो उम्मीद की किरण नजर आती है, वो आप जैसे लोग जो अभी इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं, उन्हीं से कम्युनिटी के कुछ लीडर्स ही को खड़े होना पड़ेगा. और फिर हमें फिक्र करनी होगी कि किस तरह से हम जो है इन तमाम मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन, ड्रॉप आउट्स, मदरसे वालों को किस तरह से मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं. तो हमें जो ये करना है, ये इमीडिएट करना है. कुरान के अंदर एक आयत है सूरह रायद में, श्योरली अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे चेंज देयर ओन कंडीशन.
it's better to light a candle than cause the darkness. ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसी को मैं कह रहा हूं कि भाई यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि भाई ये उसके बारे में वी हैव टू मेक श्योर, अदरवाइज वी विल बी नो वेयर। और खास करके जो इस्लाम के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, मदरसे के हैं, उनको किस तरह से हमें मेन स्ट्रीम में लाना है। और इस सिलसिले में खास करके जो लड़कियां हैं उनके लिए भी जो तवज्जो चाहिए। तो ये निया ने एक इनोवेटिव स्टेप दिया है, वन ऑफ द सॉल्यूशंस दिया है, और वो जो सॉल्यूशन है वो है मॉक बेस्ड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, विद जो पढ़ाने का तरीका है वो डीओपी बेस्ड है, और ये तमाम चीजें फ्री हैं। और मैं समझता हूं कि जो अब निया वाले जो इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि किस तरह से आप अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। Thank you so much for that, insightful presentation on Muslim education. So that make us, think about the education and our status in society. So thank you so much for that. So now I would like to call Ms. Tasneem, our senior mentor, to present about NEIA's objectives. Over to you, Ms. Tasneem. Assalamu alaikum. Jazakallah khair. Thank you so much, Taskin ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm extremely privileged to address this audience, and we would like to present to you what are the objectives very clearly and very, very emphatically highlighted by Ashraf Saab, that there is a pathetic state of education for all communities. NEIA is an NGO that is serving pan-India, and we believe in empowering dreams and transforming lives. This particular thing, ma'am, the window is closed. Which window is closed? Please share it once again. Please share it once again. Could you please share it once again? Yeah. Just give me a minute. So we believe in empowering dreams and transforming lives. We are a pan-India organization where we serve any community without having any discrepancy of caste, creed, or religion. That does not act as a bar for us. And the critical issues that NEIA has addressed is the inaccessibility, which was clearly highlighted, जो बहुत clearly अशरफ साहब ने बताया कि लड़कियों को जो है most of the time इस वजह से रोका जाता है। किसी ने comment box में भी, chat box में भी लिखा था कि most of the reasons why girl child is stopped from educating herself is because of inaccessibility, मतलब उसके घर के करीब में कोई school या college जो चीज है वो उसे वहां पर मिलती नहीं है। The most important, the gap is the starts at the beginning itself. The moment a girl child is born, that is where they decide ki, okay, if the school is not there, then she is not going to be educated at all. Otherwise, and the next thing is lack of inclusivity, because there are a lot of institutions which do not allow a certain caste of people, and the tribalism that exists, the patriarchy that exists, ये सब चीजें भी जो है कई तबकों को एजुकेशन से जोड़ नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से जो है lack of inclusivity होती है. The absence of equity, we understand clearly how expensive education has become, and it is very, very difficult for many parents to address this particular issue of providing good quality education to their kids. Leave alone good quality, they're not even able to, in some cases, not even able to provide education.
That's where NEIA comes into picture. Teachers training, which is an extremely important aspect, wherein, if we educate, we believe, NEIA believes in the fact that when we train a teacher, we are training all the students to be capable. We are training all the students that she is going to teach in her lifetime to be educated with good quality education. The substandard quality of education that exists in public schools and private schools, and we will be able to prove it to you how that particular thing happens along the journey. You will know from various other colleagues of mine who will present to you. What is NEIA's response over here is, हमने जो है मॉडर्न एक पेडागॉजी को यूज किया है, जो हमारे डॉक्टर बहुत काबिल एहतराम डॉक्टर के आनंदन है, उनकी बहुत लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने इस पेडागॉजी को डेवलप किया है, जो हमने अडॉप्ट की है. अब हमने इस वाली पेडागॉजी को क्यों यूज किया, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है. There are so many pedagogies that are available, and why haven't we not adopted it? क्योंकि यहाँ पर जो है, ये एक जो कम्युनिटी NEIA एड्रेस करती है, वो है एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. जब मार्जिनलाइज्ड वो ऑलरेडी होते हैं, उनको पता होता है कि they feel it difficult to express themselves, they find it difficult to speak up for themselves, and also the similar thing happens in case of education also. The most of the times ऐसा भी होता है कि ये पूरे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोग इतनी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते. और ये जो पेडागॉजी है, आई थिंक फर्दर डाउन दानिश सर विल प्रेजेंट टू अस हाउ दिस पेडागॉजी कम्स इनटू द रोल, इनटू द पिक्चर. तो ये पेडागॉजी जो है इस मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपनी वॉइस देती है, क्योंकि हम जो है जब पढ़ाने लगते हैं तो हम जो है उनको डिक्टेट नहीं करते. The next thing is we provide massive education using technology and blended learning models. Our classes are all completely free. We do not charge even any amount. It's completely free. It's 100% free for anybody, whoever wants to join us, be it institution, बहुत बड़ी school भी हो, या फिर we generally try to address only very, very marginalized schools and communities and institutions and individuals. But if there are somebody who wants to join with us, we are open and ready to provide trainings and everything. And there's a continuous teachers training that is also provided. You will see further in the model. When we are incorporating this technology, we use a hybrid education model, which is the on-site part and an online part. In the online part, I'm sitting over here from the comfort of my homes and delivering the lectures. And in the on-site, बच्चे जो है वो classrooms में अपने आप को accumulate करते हैं, जहां पर एक IT-enabled classroom होता है, जहां पर हम लोग Google का LMS यूज करते हैं. यहाँ पर रिमोट लर्निंग भी हो सकती है, जहां पर बच्चे या स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स हमें स्मार्टफोन्स के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं. और जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हम समझते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ कि ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनके पास जो है इस टेक्नोलॉजी को पहले तो एक्वायर करना भी समटाइम्स इज डिफिकल्टी, एंड व्हेन दे एक्वायर इट, टू यूज इट इज अ बिग चैलेंज. तो हमारे पास जो है पहले 3 दिन, नियरली 7 to 8 days, अगर इंस्टीट्यूशंस हो तो हम सारे कोऑर्डिनेटर्स को अबाउट 1 week's ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपरली टू यूज, दैट इज वी गिव देम डिजिटल एक्विजिशन स्किल्स, all the skills that are required to successfully handle a class and deliver the class is what is being done in. Nimji, please unmute yourself. The host has muted me, so then we have the digital, when Please don't mute all, like assign someone who can find the people who are talking in between. They can mute them separately. Yes, I have already assigned. Please do not mute all at once. Thank you. Yes, Miss Tasneem, continue. Sure. No, that's okay. So digital acquisition skills जो है हम लोग उनको incorporate करते हैं. अगर institutions हो तो हम coordinators की training करते हैं. अगर individuals हो, जैसे कि अभी हमें अतिया मैम ने बताया कि उन्हें पहले वो सब चीजें सिखाई जाएंगी ताकि वो इस technology को use करें. So this is the kind of a model that NEIA presents across. It's a blended learning model that NEIA talks about. And when how do we work? We have a lead center. The lead center पे जो है ये पूरी हमारी टीम आती है जो बहुत मुख्तलिफ जगहों पर से काम करते हैं. We all come together and work on
developing the content that is required to be delivered. हर रोज की क्लास में जो deliver करना होता है content को, हम वो deliver करते हैं, वो generate करते हैं, and we are all having mentor teachers and subject matter experts. So along with this, we have the secondary schools or institutions जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो secondary schools या institutions या individuals जो हमारे साथ जुड़ते हैं. इसके अलावा हमें चाहिए पड़ता है एक infrastructure, और ये infrastructure के लिए ऐसा मत समझिए कि ये बहुत it is going to be really expensive. It is going to be around 70 to 80,000 rupees that comes out for developing an infrastructure enabled classroom. अब जब ये एक क्लासरूम बन जाता है तो इसमें आप सुबह से लेकर शाम तक 4, 5, 6, you can have n number of classes also, which is why we would like NGOs to, or people working with these particular kind of organizations to join with us to see to it that, you're able to, establish, अगर आप एक AIT infrastructure enabled classroom बना लेते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को reach कर पाएंगे. इसके अलावा मेंटर टीचर्स होते हैं, जैसे मैं सीनियर मेंटर हूं यहाँ पर, मैं डिलीवर करती हूँ मैथ्स और इंग्लिश. अब आप देख रहे हैं, यू आर एबल टू क्लियरली सी दैट आई एम स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेजेस वेरी विदाउट एनी हेजिटेशन कि मैं थोड़ी देर इंग्लिश में बोल रही हूँ, द नेक्स्ट मोमेंट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश. दिस इज कॉल्ड कोड स्विचिंग, विच वी डू इन DOP. Wherever the children finds it difficult, wherever they find it difficult to understand something, we code switch in order for the child to be, or the student or an individual, और जो कोई भी है वो हमारे साथ जुड़ पाए और समझ पाए जो हम चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं. So in a few classes time, we have already seen that, children do not require this code switching after a certain period of time. That's the job of a mentor teacher who takes up. That is the reason why the mentor teachers get a lot of praise, whereas, that because of the delivery mode. The next is the coordinator, who gets continuously trained whenever they join the class along with the students. They understand how the lessons can be delivered, support us for correction. They send us their the tests that have to be conducted. They correct those particular papers, send us marks, maintain the discipline in the classroom. The operational overview has been told that we currently have 32 batches that are running across 6 to the last class is at around 9:45. So with these particular classes running, the choice over here is always the priority with NEIEA is always a student, a learner from any community, caste, creed, or religion. There is no restriction. You can just join us at any given point of time. Your convenience is our priority, and we will make available whatever time you want to learn. So this is the overview and the objectives with which NEIEA functions, and NEIEA propagates, and it is fighting for every single marginalized community or individual who wants to have a voice and get educated. Thank you so much. Over to you, Azza. Thank you. Thank you very much, Tasneem Madam. Indeed, what briefing you have given has cleared of our minds with regard to the workings of the NEIEA, and as well as the objectives and mission with which it has been set up, and the way the classes are being engaged, and the reach out part also you have highlighted very clearly. Thank you, madam. Before I proceed, I see here Mazhar Seth raising his hand. Is it you want to say something, sir, or? No, it's go on. Okay. Can you then unmute yourself, sir, please, sir? Okay. Thank you, sir. Thank you. Now, with this introduction, perhaps again we can come back to here later on. I am sure there will be some clarification with regard to our workings. Now, I would like to call upon our Mr. Syed Danish Ali Saab, who is our supervisor of our NEIEA, and who has an extensive experience in the field of education from past many decades, and he is associated closely with our NEIEA. And prior to joining NEIEA also, he was very much involved in effective teachers courses from various domains. So in this regard, I would like to request Mr. Syed Danish Ali Saab, to take over the proceedings. Thank you very much, Azhar Saab, for giving me the chance. Thank you. So, I'm sorry. I will be telling you about the pedagogy which we are implementing in our courses.
बट बिफोर दैट उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, राइट? सो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में हमें अशरफ साहब ने भी बताया कि हम एजुकेशन के एरिया में हम कहाँ पे हैं, right? It's not only about one community, all the communities, maybe the Muslims are a little on a very lower stage, but there are other communities also who are lacking in the field of education, right? But मसला कहाँ पे आता है कि एजुकेशन जो है वो उसके कई रीजंस हो सकते हैं कि जो लोग हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। भले ही वो एक, जैसे तस्नीम जी ने कहा कि फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पढ़ाई में लोगों का इंटरेस्ट जो है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं स्कूल में। जैसे अभी अशरफ साहब ने बताया कि जो बच्चा जब हायर लेवल में जैसे जैसे जाता जाता है, वो ड्रॉप आउट्स की इतनी तेजी आ जाती है कि वो आगे की एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पेडागॉजी। पेडागॉजी जो होती है, पेडागॉजी का आसान शब्द अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो पेडागॉजी इज अ वे टू डिलीवर लेसन्स, राइट? पढ़ाने का तरीका। अप टिल नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट, कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें जो है, जो रोटे मेमोराइजेशन का जो तरीका है विच यू आर फॉलोइंग फॉर मेनी डेकेड्स, एंड व्हाट दैट इज, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग कि जो हमारे लर्नर्स हैं वो लर्नर्स के बजाय रट्टू तोता बनते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो खत्म होते जा रहा है। एंड फॉर दैट we have come up with one pedagogy which is called discourse oriented pedagogy. Let me go ahead and share my screen. Just give me a moment. Thank you very much for your patience. Just a moment. Here we go. So the pedagogy which I'm talking about, it's a discourse-oriented pedagogy. It has been developed by one of our colleague, Dr. K.N. Anandan, who has who is a famous linguist and ELT consultant from Kerala. उन्होंने अपने जिंदगी के काफी साल इस पेडागॉजी को डेवलप करने में लगाए हैं। इट्स अ वेरी इनोवेटिव एंड यूनिक पेडागॉजी, राइट? सो इस पेडागॉजी के बारे में बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दैट this pedagogy, this discourse oriented pedagogy, why it is different from other pedagogies. Because इस pedagogy में what we do is we try to work on the critical thinking of the learners, where we try to cultivate the innate ability which is always there in the learners, right? अल्लाह सुब्हान ताला ने सब इंसानों को एक हमको innate ability दी है लर्निंग की, which is very relevant from the Noam Chomsky theory. Like if we are talking about language, any language which we learn, in spite of that कि लाइक हम स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बट हम अपनी एनवायरनमेंट की जो लैंग्वेज है वो हम बहुत आराम से सीख लेते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, कभी स्टडी नहीं की है, बट दे नो द लैंग्वेज, राइट? सो दैट इज वेयर वी कम्स इन कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, वी ट्राई टू enhance the critical thinking in the learner's mind by posing questions instead of giving answers. For an example, if I talk about the implementation of discourse-oriented pedagogy in our classes, like on this slide, I have taken an example of a lesson from environmental science, right? So if we are introducing a chapter of environment to our learners, so what we will do is we will not straight away give them the a book to read or the answers to mug up. What we will do is we will take the help of visuals, videos,
and other quizzes and games. Like for an example, if I will show this picture to the learners and then I will pose questions to them to trigger the thinking process in their mind about the chapter. That what do you see in the picture? What comes to mind when we hear the word environment? What are some examples of natural things that you see around you? And if we put all things together, what can we call it? Now, at this point, जो learner है वो सोचना शुरू करता है और फिर वो हमको answers देना शुरू करता है. Now, at this point, like ऐसा भी हो सकता है कि that at this point we are not getting the proper answers. Maybe we are getting improper answers from the learners because they are from marginalized backgrounds. जो स्कूल गए नहीं हैं या फिर जिनका स्कूल से काफी टाइम से नाता टूटा हुआ है. So यहाँ पे जो mentor का रोल आता है, right? जब improper answers student देना शुरू करते हैं, then mentor also give them supportive questions, right? And then mentor, with those improper answers, mentor evolve a proper answer and then bring the complete class into an agreement. And this technique, what this do is this is how we are like showing the importance of DOP in our online learning programs, where we are empowering the students to question and analyze. Like our students put questions, and the other students, before the mentor give them the answer, we ask the other learner what do they think about the question. And with that collaborative environment, right, we encourage collaborative learning. Here, what we are doing, we are giving them a conceptual understanding of the topic which we are delivering, instead of giving them answers to memorize. Here, what DOP is doing, that DOP is filling that gaps in the diverse learners, right? जहाँ पे वो एजुकेशन से छूटे हुए थे, जो एजुकेशन उनको मिल नहीं पाई थी, तो यहाँ पे हम उन सारे लर्नर्स को एक जगह लाकर उनको इस पेडागोजी से, इस कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट से हम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सप्लोर करते हैं. And we have applied DOP in lesson construction also. Like whether we talk about maths, English, science, or any other subject, we are implementing discourse-oriented pedagogy in all the subjects, where we as a teachers, we are creating the concepts, we are developing modules by integrating DOP in it. And then we are delivering lessons in an interactive environment with the help of visuals and videos. Now, ये जो हम कर रहे हैं, हमारी जो एजुकेशन का मेथड है, it's not only for any one section. Primary classes से लेके secondary classes तक we are delivering lessons. We are incorporating DOP in all the lessons. Like this slide, this is for the primary classes, where we are engaging our students in quizzes. Like the slide which I'm showing you, on the slide there are pictures जो कि हमारी एक maths class से हैं. So we are developing age appropriate lesson plans, where we are trying to nurture their critical thinking by engaging them in activities which involves games and quizzes also. वो जो है हमारी classes को interactive बनाती हैं, student का interest उसमें जगाती हैं. In the same way, when we talk about the higher secondary classes, right? वहाँ पे भी what we are doing, that we are solving complex problems, right? With examples, real world examples, by engaging the students in discussions, debates, and other activities.
Like if we talk about the impact of discourse-oriented pedagogy, I would like to share this video with you people. Like this is one of our learner who will tell you about the pedagogy which we are following in our courses. Assalamu alaikum and good afternoon. My name is MD Vasaza, and as one of the learners from the NEIEA English course, one thing I enjoyed about our online classes is its interactive nature. Instead of inactively receiving information, we actively engaged in conversation and debates, which not only improved our language skills but also boosted our confidence in expressing ourselves in English. This interactive approach made learning enjoyable and encouraged us to participate. Overall, NEIA English proficiency course has been highly beneficial. It's not only equipped with us with language skills, but also cultivated critical thinking, communication, and problem-solving abilities. I'm deeply grateful for the innovative approach to education adopted by NEIA, and I eagerly anticipate further improving my English proficiency through other courses offered by NEIA. Thank you. Now, as you have listened to this learner, the pedagogy which we are using in our classes, that's an interactive pedagogy, and that's making an impact on the learners. Assalamu alaikum and good I'm sorry. afternoon. My name is MD. Assalamu alaikum. Okay, Ms. Farah will tell you about the platforms which we are using for our classes. So I will skip the slide. Yes, Danish. Yep. I'm here. No. Okay. It got stuck. I don't know what's happening. Just give me. It got stuck. Yep. Yeah. If you stop sharing, yeah, it got stopped. Assalamu alaikum. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Danisa, for giving that insights of the pedagogy which we are using. So now I would like to call our mastermind behind our technical skills, our own technical head, Ms. Farah Khan from Hyderabad. She will be sharing the insights of technology in our courses. Over to you, Ms. Farah. Thank you, Mr. Skin. So nice of you. So very good evening to one and all. My name is Farha Khan, and I am technical team leader and also math department leader. So at NEIEA, and I am a Google certified educator. So the apps which we are using and the technology, हम ये टेक्नोलॉजी हमारे क्लासरूम तक कहाँ कैसे लाते हैं और कैसे पहुंचाते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी. Just give me a second to share my PPT. आप सभी को PPT दिख रही होगी. तो इस टेक्नोलॉजी जो अभी की टेक्नोलॉजी है, अभी जो चल रही है, इट्स नॉट लाइक जो अपडेटेड वर्जन है, उस टेक्नोलॉजी को हम हर बच्चे, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही इक्विटेबल आता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम ये जो रनिंग टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, वी वांट टू ब्रिंग इट टू एवरी चाइल्ड irrespective of caste, creed, religion. तो ये हम कैसे लाते हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, हम दो मोड्स में ऑपरेट करते हैं. एक इंडिविजुअल मोड है, एक ऑर्गेनाइजेशन मोड है. जहां ऑर्गेनाइजेशन मोड होता है वहां सारे बच्चे बैठ जाते हैं और उनके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए मैं अभी आपको समझाती हूँ. We have LCD screen there, and then a web camera so that we as mentors can see students और speakers ताकि हमारी आवाज उन तक clearly पहुंचे. माइक वो बात करें हमसे, और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड चाहिए ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं. लैपटॉप और CPU भी चलेगा. प्रिंटर, क्योंकि असेसमेंट आप जानते हैं इज द बैकबोन ऑफ एनी
कोर्स, कुछ भी आप सिखाना चाहें तो असेसमेंट बहुत ही जरूरी होता है. विदाउट असेसमेंट वी कैन नॉट ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड. तो असेसमेंट के लिए प्रिंटर बहुत ही जरूरी होता है. ये देखिए, आप एक यहाँ झलक देख सकते हैं. दिस इज अ ग्लिम्स, जहां मदरसे के बच्चे टीवी पे देख रहे हैं, जहां सारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया है कनेक्टेड है, और हमारी क्लास, निया की क्लास वहां चल रही है और बच्चे पढ़ सकते हैं. वो जो उधर साइड ठहरे हैं वो है कोऑर्डिनेटर, जिनसे हम हर वक्त राबता करते हैं. वी गेट कनेक्टेड विद दैट कोऑर्डिनेटर, वी सीक हेल्प. हमारी आवाज सुनाई देती है या नहीं देती है, ऑल दैट कॉन्वर्सेशन विल गो ऑन विद द कोऑर्डिनेटर. इफ इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंटरनेट है, टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो कोऑर्डिनेटर बहुत ही मदद करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, और हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं. ये क्लास वर्किंग है, आप देख सकते हैं. ये और एक क्लास, एक एमवीएफ जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ा हुआ है, वन ऑफ आवर कोलैबोरेटर्स. वो आप ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हमारे जो एक्स मेंटर है मिस नर्मदा, वो मैथ की इंपॉर्टेंस जो है ये बच्चियों को यहाँ पे समझा रही हैं. मोस्टली ऑफ देम दे आर ऑर्फेंड, या नहीं तो बहुत ही वेरी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से ये आते हैं, और ये यहाँ क्लास देख रहे हैं मैथमेटिक्स की. ये हम कैसे, हमारा जो लर्निंग मटेरियल है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर गूगल ड्राइव में, क्योंकि ये जो बेसिकली पेडागोजी था ये ऑन साइट के लिए था. इसको हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत और मशक्कत के बाद ऑनलाइन बनाया है. हमारी पूरी टीम के मेहनत के बाद ही ये जो ऑन साइट लर्निंग का मटेरियल था पूरा ऑनलाइन डेवलप किया गया है. क्योंकि ऑन साइट में तो सिर्फ चौक और बोर्ड होता है, उससे पढ़ा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सभी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना पड़ता है. तो मैं पहले सर्टिफाइड एजुकेटर हुई, फिर मैं सभी को ऑनलाइन गूगल क्लासरूम की ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग, उसके बाद फिर ऐसे ये बढ़ता गया और ये ट्रेनिंग का सिलसिला बढ़ता गया. और अभी हम सभी को आईटी ट्रेनिंग भी देते हैं, सभी टीचर्स को, एज वेल एज इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो हमारे पास सीखना चाहें. तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनाइज्ड, हम गूगल ड्राइव में कैसे इसको ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं ताकि हमारे अटेंडेंस शीट सब चीज ट्रैक पे रहे. गूगल क्लासरूम हम यूज करते हैं, गूगल स्लाइड्स हम प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ गूगल स्लाइड्स पे से, गूगल डॉक्स, फॉर्म्स जो क्विजेस होते हैं, ये सारी ट्रेनिंग हम, अगर इंडिविजुअल स्टूडेंट होता है तो उसको पहले 3 दिन यही ट्रेन करते हैं कि वो कैसे अपना होमवर्क दे, कैसे क्लास ज्वाइन करे, कैसे हैंड रेस करे, कैसे स्क्रीन अपना शेयर करके बताए. ये सारी ट्रेनिंग हमारे मेंटर्स देते हैं. अब एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे होता है, हम सबसे पहले वी विल ब्रॉडकास्ट, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं सोशल मीडिया पे. जैसे कि आप व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, वी आर ऑल एक्टिव ऑन ऑल द सोशल मीडिया. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर द सोशल मीडिया टीम दैट वी आर एक्टिव. एंड यहाँ से ब्रॉडकास्ट होता है, सभी जगह पहुंचता है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां पहुंचता है, बच्चे रजिस्टर करते हैं और हमारे एक्सेल शीट में उनका सारा कांटेक्ट डिटेल्स आ जाता है. तो उस एक्सेल शीट से कांटेक्ट, हम कॉल पे उनको पर्सनली कॉल भी करते हैं. वी वेलकम देम ऑन बोर्ड एंड वी सेंड देम वेलकम ईमेल so that they feel connected and acknowledged with us. And after that हम उनको व्हाट्सएप मैसेजेस भी करते हैं, और एक ग्रुप, ये जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है ये मैं एक यहाँ पे क्लिक करके बताना चाहूंगी कि कैसे हमने उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जितने लैंग्वेजेस हम कर सकते हैं, मेनली वी फोकस्ड ऑन 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में हमने उसको ट्रांसलेट किया है. और अगर कोई यहाँ पे अगर तेलंगाना के हैं तो उनके लिए हमने तेलुगु में भी ट्रांसलेट किया है. ऐसे हमने गूगल फॉर्म के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आसानी से वो समझ जाए और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे. सो are you able to see the registration form right now? Yes, it is visible. Okay, fine. So are we back on the PPT right now? Can you see my PPT? Yes. Yes, ma'am. ठीक.
तो ये एक एग्जाम्पल था रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता कैसे है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आप देख रहे हैं सारे गूगल मीट पे कैसे बच्चे इंडिविजुअली ज्वाइन किए हैं। फर्स्टली आपने देखा था जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे बैठे हैं, स्क्रीन है उनके सामने। अब ये इंडिविजुअली वो कैसे ज्वाइन किए हैं, और यहाँ पे हमारे मेंटर पढ़ाते हुए आपको नजर आते हैं। ये सारे टेक्नोलॉजीज जैसे चैट जीपीटी, गूगल पार्ट, ये हम हमारे लेसन प्लान की डेवलपिंग में इंटीग्रेट करते हैं ताकि वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बच्चों के पास, मार्जिनलाइज सेक्शन के पास, विदाउट एनी इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उन तक पहुंचे ये सारी चीजें। AI एज इमेज जनरेटर्स आप अभी देख सकते हैं जो दानिश सर ने प्रेजेंट की थी, वो सारी इमेजेस AI से डेवलप हुई हैं ताकि वी आर अहेड ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज, वी आर विद द टेक्नोलॉजीज। So I am here to conclude my presentation. NEIA is dedicated to adopting cutting-edge technology in all its work so that it is efficient, productive, and enhances massive quality education across the country. सारे country में जितने भी 28 states हैं, आप उनके नाम देख सकते हैं हमारे registration form के link में। जहां वो कोई भी states है वो अपना state select कर सकते हैं, सारे states वहां पे रखे हुए हैं। With this, I conclude my presentation. And I am very thankful for the opportunity. Thank you, Ms. Taskeen. Thank you, Ms. Farah, for that wonderful Over to you. Presentation. So now I would like to invite Mufti Sajjad Hasmi Sahab to the platform. He brings a wealth of experience as a lecturer in Devban and helping NEIA to connect with madrasas throughout the country. Today he will be, enlightening us on how NEIA is making the impact in the life of madrasa children. Let's give a warm round of applause to Mufti Sajjad Sahab. Please, over to you, Sajjad sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम मेहमानों का जिन्होंने निया की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर और इस प्रोग्राम को हसीन से हसीन बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन और एक अपना अहम ताउन पेश किया। निया के बारे में जहाँ तक सुनना था और निया के बारे में जानना था, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से काबिल तजर्बाकार असातिज़ा से, ऐसे ही अशरफ शाह साहब से आपने समाअत फरमाया। मुझे यहाँ ये बताना है कि निया मदारिस अरबिया और मुल्क के गोशे गोशे में फैले हुए मकातिब और दीनी दरसगाहों में निया का क्या किरदार है और निया का क्या रोल है, वो किस अंदाज से मदारिस को देख रहा है और किस तरीके से मदारिस के लिए फिक्रमंद है। तो निया ने बुनियादी तौर पे मदरसों के लिए जो अंग्रेज़ी ज़बान है, इसी तरीके से तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, और तफहीम की सलाहियत को एक नया रुख और एक नए सिमत देने के लिए निया ने जो कोर्सेज डेवलप किए हैं, मैं सबसे पहले निया के तमाम अराकीन का, तमाम मेंबरान का और इनके सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर जावेद मिर्ज़ा साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मदरसे को भी अपनी लिस्ट में और अपनी फहरिस्त में शामिल किया। यकीनन मदारिस के खिदमात से किसी को इनकार नहीं, मजहबी मैदानों में और मिली खिदमात मदारिस की हैं और उसकी एक रोशन तारीख है, लेकिन उसी के साथ साथ बदलते दौर में तकाजा इसका था कि मदारिस दुनिया के साथ साथ अपना कदम से कदम मिलाएं और दुनिया के तरक्यात की दोष के साथ साथ ये भी चलने का हुनर सीखें। तो इस सिलसिले में निया ने जो कोर्स डेवलप किया है, उसकी जो खुसूसियात हैं, वो खुसूसियात ये हैं कि निया ने एक तो ये है कि अपने वक्त को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है। वक्त के अंदर इतनी लचक है कि मदरसे वाले सुबह 7 से लेकर के और रात के 10 बजे तक इनके कोर्सेज फराहम किए जाते हैं और वो कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री हैं। तो इस फ्री कोर्स को हासिल करने के लिए वो किसी भी वक्त में निया को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि निया ने मदरसों के तलबा की उम्र को और उनके फैमिली बैकग्राउंड को और ऐसे ही उनकी इल्मी सतह को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग कोर्सेज डेवलप किए हैं, जिनमें से एक तो यह है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 साल से लेकर के 12 साल है, फिर उसके बाद 12 से लेकर के 18 साल है, फिर 18 से लेकर के 22 साल है, हर एक की सतह के लिए इन्होंने
एक जामे और एक माने और एक बहुत ही नतीजा खेज कोर्स तैयार किया है। अब उस कोर्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जबान को रटवाना नहीं है, बल्कि जबान को जबान के एक ताज़ा अंदाज में, फ्रेश अंदाज में और एक मुतहरिक अंदाज में पढ़ाने का सिलसिला है, जिसमें डीओपी के बारे में आपने सुना। इसी तरीके से बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, जो उनकी अकली सतह है और जो उनकी दिमागी और फिक्री सोच है, उसको बुलंदी अता करना। इसी तरीके से उनकी तफहीम को आगे बढ़ाना। इसी तरीके से जो मुश्किलात दरपेश हैं, उन मुश्किलात को हल करने का सलीका सिखाना। निया के कोर्स की अहमियत को देखते हुए मुख्तलिफ मदारिस इस कोर्स से फैज़याब हो रहे हैं और अपने अपने औक़त वक्त के लिहाज से वो कोर्सेज मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में ये कोर्स फैला हुआ है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जामिया फातिमा लिल बनात है, इदारा मरकज़ुल मारिफ है, इदारा मरकज़ुल मारिफ जोधपुर में है, जामिया फातिमा लिल बनात ये बिहार के मशरकी चंपारण में है, जामिया खनसा लिल बनात ये अमरोहा में है, मदरसा अनवारुल कुरान ये अहमदाबाद में गुजरात में है, जामिया तजवीदुल कुरान मुंबई मलाड में है। इसी तरीके से जामिया अर रशीद के टीचर्स को ट्रेन भी किया है जो बीकानेर में है। और इसी तरीके से जामियातुस सालिहात, जिसमें भी बिल्कुल फ्रेश कोर्स शुरू किया गया है। और इस तरीके से 10 मदरसे अभी लाइन में है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने इंतजामात कर रहे हैं, वो भी जल्द ही इस कोर्स से मुस्तफिद होंगे। उसके बाद यह है कि मदारिस में निया का अपना रोल क्या है, किस तरीके से निया मदरसों तक पहुंचता है। तो सबसे पहले तो निया का तस्वुर यह है कि वो निया मदरसों के बच्चों को भी चाहता है कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि पैसों के न होने की बुनियाद पर, वसाइल की किल्लत की बुनियाद पर वो असली तालीम से महरूम रह जाते हैं, या फिर उनके मदरसों में टीचर तो होते हैं लेकिन सब्जेक्ट को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी अहमियत दी जानी चाहिए, या इस तरीके से उनको एक माहौल नहीं मिलता और माहौल से घबरा करके वो फिर असली तालीम से महरूम रह जाते हैं। तो निया ने ये तय किया है कि हम उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की भी ज़रूरतों का और उनके तकाज़ों का भी ख्याल रखेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम निया का ये है कि निया इसके लिए वक्तन फ़वक्तन सर्वे करता है मदरसों का, उसके ऊपर मदरसों के क्या तकाज़े हैं, क्या ज़रूरियात हैं, उन ज़रूरियात को जानता है और जान करके और उनके तकाज़ों को समझने के लिए एक रिसर्च बेस्ड तहकीकी मकाला भी पेश करता है। उनमें मदरसों के ऊपर जो तहकीक किया गया तो पता चला कि या तो वो मदरसे वाले ये समझते हैं कि दोनों तालीम का संगम और दोनों को साथ साथ ले जाना हमारे लिए मुश्किल होगा। दुनिया ने इसके ऊपर भी वर्कआउट किया और उसको हल करने की कोशिश ये की कि पूरे 24 घंटे का जो निज़ाम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको 2 घंटा चाहिए, 3 घंटा चाहिए। बकिया मदरसे का निज़ाम वो उसका जो निज़ाम है वो अपने निज़ाम पर चले, जो उसका सिलेबस है वो सिलेबस चले। हमारा जो है 2 पीरियड अंग्रेजी का, मैथमेटिक्स का, चूंकि 2 बुनियादी चीजें हैं, अगर ये हो जाती हैं तो आगे चलकर तालिब इल्म किसी भी मैदान के अंदर अच्छी कारकर्दगी कर सकता है। उसके लिए मदरसों के जिम्मेदारान से मीटिंगें होती हैं, पर्सनली भी मीटिंग होती है, ऑनलाइन भी मीटिंगें होती हैं। और मकसद इससे ये है कि तलबा को हम एक असली तालीम के ताल्लुक से एक हमागीर सोच और एक जामे फिक्र दें, ताकि वो किसी भी मैदान में जाए तो अपने आप को किसी से भी कमतर और किसी से भी हकीर और किसी से भी पीछे न समझे। उसके लिए ये निया का ग्रुप मदारिस के लोगों से गुफ्तगू करता है और गुफ्तगू करके उनको ये समझाता है कि मजहबी और असली तालीम दोनों साथ साथ हम पढ़ा सकते हैं और दोनों के अंदर हम क्वालिटी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद फोकस क्या है? फोकस ये है कि जो बुनियादी सलाहियत है अंग्रेजी की, मैथ की, साइंस की, वो पैदा अगर हो जाए तो फिर वो तालिब इल्म आगे अपनी राह खुद ब खुद निकाल सकता है। उसके बाद अगर तलबा एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम की तैयारी के लिए भी निया ने काबिल असातिज़ा को हायर किया है और उनके मुजर्रब असातिज़ा नियोस की तैयारी कराते हैं। ऐसे ही हर सूबे का जो बोर्ड का निज़ाम है उस बोर्ड के निज़ाम की भी तैयारी की जाती है। इसी तरीके से उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए अलग अलग कोर्सेज भी निया वक्तन फ़वक्तन इजाद करता रहता है। जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसमें टेक्नोलॉजी जो फील्ड है, जिस फील्ड में बहुत से ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिन एप्लीकेशन से हम एजुकेशन में फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी निया जोर देता है और मदारिस के स्टूडेंट्स को उसकी ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपने एजुकेशन में सिर्फ व्हाट्सएप तक न रह जाएँ और सिर्फ फेसबुक तक न रह जाएँ, बल्कि उन चीज़ों से भी फ़ायदा उठाएँ जो वक्त की ज़रूरत है और वक्त का तकाजा है। उसके बाद बच्चों की सलाहियत के ऊपर जोर देने के लिए देखिए ये बच्चे की राइटिंग है जिसको यहाँ पर आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो निया का निज़ाम है वो निज़ाम है आपस में एक मुनाकशाती और आपस में गुफ्तगू का अंदाज होता है कि
टीचर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबक पढ़ा के चला जाता है, बल्कि तालिब इल्म को पूरा खुल करके बोलने का मौका देता है। तालिब इल्म पढ़ता है, फिर करेक्शन होता है, और फिर करेक्शन के साथ-साथ उसके सबक की तलखीस और सबक का खुलासा उसको पेश करने के लिए दिया जाता है। उसकी एक झलक ये इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं। उसके बाद ये निया का पढ़ने वाला एक तालिब इल्म है, जिसने अपने कम्युनिकेशन को और अपनी गुफ्तगू के अंदाज को इसके अंदर पेश किया है। मैं चाहूंगा कि आप सुने और सुन करके देखें कि 90 डेज के कोर्स में ये तालिब इल्म किस कदर अपने अंदर तब्दीली और किस खुद एतमादी के साथ ये गुफ्तगू कर रहा है। Assalamu alaikum. My name is Fakhruddin Ramzan. I am a student at Idara Markazul Ma'arif, Jodhpur, Rajasthan. I have been taking English class, which is provided by NEIEA for last 1 month. We are 30 students in our class, and they provided us such a wonderful opportunity to learn English language. Thank you so much, NEIEA organization. उसके बाद है निया के अंदर आप देख रहे हैं कि बच्चे तस्वीर लेके खड़े हैं। ये बच्चों की खुद की ड्राइंग है और खुद इन्होंने अपने नक्शो निगार बनाए हैं। तो निया जहां पर तालीम देता है, वहीं पर इन बच्चों को, गरचे ये बच्चे हमसे दूर हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं, जो सरगर्मियां हैं और जो इल्मी मेहनत है, उस मेहनत से पता चलता है कि ये तलबा ऑनलाइन सीख करके भी ऐसा लगता है कि ये ऑफलाइन का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये इनकी जो है सोच है, इनकी जो फिक्र है, इसके ऊपर भी मेहनत की जाती है और तलबा को पूरा एक ऐसा माहौल और एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें तलबा अपने आप को ये महसूस न करे कि हम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। उसके बाद है सबसे अहम जो है निया का, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये मदारिस के तलबा के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है कि आप दीनी हमियत के साथ और दीनी गैरत के साथ और दीनी उलूम के साथ साथ अपने अंदर असली तालीम को हासिल करके आप इस लायक हो सकते हैं कि आप कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के लीडरान के साथ आप अपनी बात रख सकें, अपना इजहार ख्याल कर सकें और पब्लिक स्किल का हुनर सीख सकें। उसके बाद ये एक मदरसा है तजवीदुल कुरान, जहाँ पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। वो कोर्सेज में हमने एक बार इंटरव्यू लिया था, तो ये इंटरव्यू है कि वहाँ इस निया ने किस तरह से इम्पैक्ट डाला है मदरसों के ऊपर। मेरा नाम शाजिया खान है और मैं नूर महर हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। निया से जुड़े क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का बेनिफिट ज्यादा है और ऐसा है कि फ्री ऑफ चार्ज है। और सबसे पहली बात है, फ्री ऑफ चार्ज होने के अलावा मतलब जो उनका एफर्ट है वो वाकईतन शो होता है। जो पढ़ाई का तरीका है, जो उनका करिकुलम, वो ऐसा है कि आपके हिसाब से पूछते हैं बराबर कि आप लोग मतलब क्या चाहते हो किताब के थ्रू, यानी आप जो रेकमेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर लर्निंग कराते हैं और हर एक बच्चों पर प्रॉपर एफर्ट डालते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर बच्चों को वर्चुअल लर्निंग हो रही है तो कुछ पर्टिकुलर बच्चों पर ही ध्यान दे रहे हैं। मतलब जितने बच्चे होते हैं उन पर उनका काफी ध्यान होता है और मुझे काफी इम्प्रूवमेंट दिखा, खासतौर पे हमारे बच्चों में, इंग्लिश में भी और साथ में मैथ्स में भी। तो उनका तरीका बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट और स्कूल वाले उनसे जुड़े ताकि बच्चे और ज्यादा निखर जाएं। तो आपने ये देखा बच्चों के पढ़ने के बाद इनके प्रिंसिपल का ये बहुत ही वक़ी और बहुत ही अहम तबसरा आया और वजह इसकी ये है कि जो इन्होंने बात कही और ये हकीकत भी है कि निया में सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्रुप एक ज्वाइन कर लिया, एक भीड़ लगा के छोड़ दिया, बल्कि हर तालिब इल्म का अपना अलग असेसमेंट है, उनका अपना अलग जायजा है और हर हफ्ते उनका एक इंटरव्यू होता है कि पहले ये बच्चे कहाँ थे और अब आगे कहाँ जा रहे हैं। मेरा नाम शाजिया खान है और मैं नूर महर हाई स्कूल की। उसके बाद निया का फायदा ये है जो एक खुलासे के तौर पर है, एक तो ये है कि बच्चों की सलाहियत को उजागर करना, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन की स्किल पैदा करना, बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत, इनोवेशन पैदा करना और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। उसके बाद यह है कि सिर्फ उन बच्चों को ये सब स्किल देकर नहीं छोड़ना है, बल्कि बच्चों के अंदर एक ऐसी तब्दीली बर्पा करनी है कि बच्चा खुद अपने अंदर ये समझे कि मैं पहले कुछ और था और मैं ये समझ करके कि दूसरे लोग तो एजुकेशन में आगे हैं, मैं क्यों पीछे रहा, तो वो खुद उसको बाइख्तियार बनाने की भी कोशिश की जाती है। उसके बाद एक चीज जो सबसे अहम है निया की, वो ये है कि कोई आदमी ये सोचे कि ऑनलाइन तालीम हो रही है तो तलबा अपना अलग पढ़ते होंगे और उसमें आपस में इज्तिमाई निज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, इज्तिमाई निज़ाम को काफी निया ने बड़ा ख्याल रखा है ताकि तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से हेल्प ले, मदद ले और आगे बढ़ने की कोशिश करे। Let's make right angles, everybody. Let's make acute angles. Let's make obtuse angles like this. Very good. Very great. आपने देखा कि ये बच्चे
Let's make right angles. प्रोग्राम के साथ साथ इशारे से भी सीख रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि किसी भी तरह से निया ने किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स तमाम मदारिस के लिए, तमाम स्कूलों के लिए और उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं, ये कोर्स उनके लिए मुफीद साबित होगा। और उसकी वजह ये है, एक तो ये कि टाइम इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल है, दूसरी चीज़ ये कि तालीम मेयारी है, और तीसरी चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया कोई फ़ी नहीं है और किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं इसी वक्त आपको पढ़ना है, बल्कि उसको पूरी आज़ादी दी जा रही है कि सुबह 7 से लेकर के रात के 10 बजे तक कभी भी एजुकेशन हासिल कर सकता है। मैं निया टीम का और जावेद मिर्जा साहब का, उनके तमाम स्टाफ मेंबरान का और इसी तरीके से तमाम आने वाले मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपने फिक्रमंदी का इजहार किया। अल्लाह ताला इस ऑर्गेनाइजेशन को खूब तरक्कियात से नवाजे और सबको सबकी ज़रूरियात की तकमील फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के हालात को ठीक करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। थैंक यू मुफ्ती सज्जाद फातिमी साहब। मैं प्रोसीड? यस, थैंक यू मुफ्ती साहब। आपका जो मदरसा का जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निया का एक इम्पॉर्टेंट टारगेट ग्रुप जो है मदरसा स्टूडेंट है, जो बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। एंड एज इन निया वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट we do not interfere with the pedagogy of the madrasa, okay, but whatever we have to teach, we will go ahead with this. And before we proceed towards the next speaker, I would like to request our Miss Mubashira ma'am to please share a testimony, okay, with regard to our NIA. Okay, on it. Let me share it. Give me a moment, please. Thank you, madam. We have, one of the class joined live testimony. You can see from Kerala, one of our classes. Students, you can see, somebody can pin that right. Yes, they are yes. here with associated with us from, I think, 3 months, right? So the students are from Kerala. They take, 11th grade NCERT classes, biology, English, and math. So they are joining us from Kerala. JDDI. So one of the student, if Danisa knows, he can call and they can share their experience with us. Surely, then we can play the testimonial also. Yes, live testimonial, right? Miss Sania or like Miss Afreen or Muhammad Shakil, anyone who would like to go ahead and speak for a minute? Sania, would you like to come? झारखंड से है। हाँ, ये झारखंड से है बेसिकली। केरला में वो लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश उनको थोड़ी सी कम आती है। तो मोहसिन या सानिया कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। बेटा आगे आइए और आपका एक्सपीरियंस हिंदी में या इंग्लिश में, आपकी मर्जी, आप शेयर करिए। कैसे लगे हमारे क्लासेस? हाँ, हाँ सानिया, आप दिखाई नहीं दे रही बेटा। सानिया, where are you? She is near the mic. Yeah, but, she's near the mic. Yeah. Yeah, right. Mohsin has come, I guess. Yes, Mohsin, go ahead. बोलिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, आपको बोलना है, आपको निया की क्लासेस कैसी लगी, जो मैं पढ़ाती हूँ, दानिश सर पढ़ाते हैं, नीलोफर जी पढ़ाती हैं, तो आपको कैसे ये क्लासेस लगी और पहले क्या मुश्किलात आपको पेश आती थी और अभी कैसे ये आसान हो गई हैं, आपको ये बोलना है। क्या बोल पाएंगे आप? जी जी बोलिए, बोलिए बेटा। जी देखिए, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। 1 मिनट। कोई और मोबाइल से ज्वाइन हुआ तो प्लीज आप मोबाइल से लीव कर दीजिए। यहाँ हम सब ऑलरेडी ज्वाइन है ना बेटा, मोबाइल से कोई नहीं ज्वाइन हुई है। हाँ, कंटिन्यू करिए मोहसिन। यस प्लीज। जी, हम लोग इससे पहले, यहाँ से पहले हम लोग झारखंड में एक स्कूल से पढ़ते थे। आप में से कोई मोबाइल से भी लॉगिन कोई है? मोबाइल से है बेटा? हाँ, जूम मीटिंग में कोई मोबाइल से है तो वो जो है
लीव कर दें और यहाँ से हम डायरेक्टली कनेक्टेड है ना बेटा, तो आप यहाँ से बात करें। यस मिस। हाँ, अभी भी कनेक्टेड है, कोई है जो कनेक्टेड है, अपने अपने मोबाइल चेक करें, और हाँ, जिसके लॉग पास आउट भी कर दो या ज्यादा, फिर मोबाइल से जो है वो बाहर चले जाए, राइट। हाँ जिसके पास है, ज्यादों के पास तो नहीं है दानिश भाई मोबाइल, वो मोहसिन के पास है। हाँ वो मोबाइल लेके बाहर चले जाए, क्योंकि हमने आगे भी और प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। बोलिए बेटा। आप म्यूट पे हैं मोहसिन, आप म्यूट पे हैं बेटा। हाँ बात करिए। नहीं, अभी भी म्यूट पे ही हैं आप। आपको म्यूट करना आता है, अनम्यूट करना आता है, वहां पे एक माइक जैसा बटन हो, आप उस पर क्लिक करिए, ज्वाइन Don't विथ you have? कंप्यूटर, Yeah, ज्वाइन नहीं विथ नहीं, कंप्यूटर ऑडियो, उनकी पहले तो ऐसे आवाज आ रही थी अभी। हाँ नहीं, वो मोबाइल से आ रही थी इसीलिए इतना गूंज रहा था वो। इस पे आपको स्क्रीन पे ऐसे माइक का बटन नहीं नजर आ रहा, आप स्क्रीन पे एक बार ऐसे क्लिक करिए। मिस यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, वो साउंड का अभी प्रॉब्लम है, वो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है बेटा, अभी आ रहा है। अच्छा, वो आप सानिया बाहर से जी, बात कर रही हैं। हाँ आप हाँ ही सानिया, बात कर। आप ही बोल दीजिए सानिया, कोई बात नहीं, अगर आपका चेहरा नहीं दिखता है तो आप ही बात करिए, बाहर चली गई ना आप, वहीं से बात करिए, हम सुन लेंगे। वीडियो नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे। एक मिनट। बात करिए मोहसिन। वो इस फोन से ही बात करना पड़ेगा, उनका फेस नहीं देख सकिएगा आप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मोहसिन मोबाइल से बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा आप ठीक बाहर आके मोबाइल से बात करिए। I think that is going to take a time. We'll have recorded. नहीं, ही वेंट अगर चाहते हैं आप तो लाइव अभी हो गए ना, सो ही शुड बी स्पीकिंग। अगर बेटा टाइम लग रहा है तो जो रिकॉर्डेड वर्जन है हम वही बता देंगे, ठीक है, हम बता दें रिकॉर्डेड वर्जन जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है। मोहसिन, आप हमें सुन पा रहे हैं? सानिया? यस मिस। हाँ बेटा, अभी बताइए कि आपको पहले क्या मुश्किल पेश आती थी जब आप झारखंड से केरला आए और आपको पढ़ाया जाता था, और अभी निया से आपको क्या आसानियां हासिल हैं, ये बताइए। जी जी मिस, हम जब झारखंड में पढ़ते थे तो मैंने 10th का बोर्ड एग्जाम जो था लिखे, हम हिंदी मीडियम स्कूल से लिखे, और हमें इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और हम यहाँ मतलब आए थे केरला हायर एजुकेशन के लिए कुछ आए थे, हमें यहाँ के बारे में बताया गया था तो हम आए थे यहाँ, और हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ मतलब यहाँ का लैंग्वेज भी अलग होता है, ये मालूम नहीं था हमें। तो हमने जब यहाँ आया तो मुझे 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने बहुत मुश्किल हुए, और अभी भी लैंग्वेज का बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किया ऑफिस में, मेन ऑफिस में, कि हम लोग को हिंदी क्लासेस चाहिए। तो पता एक मिस है हम लोग को, सानी मिस और फरहान सर, और ये सब मिल करके आप लोगों से कैसे कैसे ज्वाइन किए। हम लोग को अब निया के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने ही हमें बताया, और जब क्लासेस स्टार्ट हुए तो बहुत ही अच्छा अब हम लोग को चल रहा है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है, तीन तीन क्लासेस दिए जा रहे हैं हम लोग को, जिसमें से सबसे फर्स्ट क्लास होता है इंग्लिश का, और सेकंड होता है मैथ का, और सुबह मॉर्निंग में होता है बायोलॉजी का। और ये तीनों क्लासेस बहुत ही बढ़िया तरीका से लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में लेते हैं दानिश सर, जो कि हमें इंग्लिश किताब सिखा रहे हैं, मतलब किताब का मीनिंग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और क्वेश्चन जो मतलब देते हैं हमें हमें बोलने के लिए भी कुछ कुछ सिखा रहे हैं। उसके बाद मैथ का भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मतलब समझ में नहीं आता था हम लोग को मैथ भी। क्या क्लास जाते थे तो क्या पढ़ाई होता था, नहीं होता था, कुछ समझ में नहीं आता था मलयालम लैंग्वेज में। लेकिन मैथ का भी अब थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल ही मतलब अब अच्छा हो गया हम लोग का मैथ।
तो मैथ अब हम लोग बना रहे हैं, और उसके बाद फिर बायोलॉजी का भी क्लास भी अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है निया ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से, कि हम लोग को ये केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दो क्लास मिल जाता तो बहुत बहुत वो शुक्रिया था। लेकिन ये दो क्लास बहुत जरूरी भी है हमें, क्योंकि समझने में बहुत मुश्किल होता है यहाँ। और दानी सर को भी हम लोग बोले थे, फरहाम इसको भी बोले थे, और इन्होंने बोले हमें कि हम लोग इसके जुगाड़ में हैं, मतलब इनको अरेंज कर रहे हैं, खोज रहे हैं। Yeah, yes, Mohsin, we are trying our best to appoint chemistry and physics teacher. Soon, we will provide you. We will start providing you those classes also. Thank you for sharing the live, testimonial. Thanks a lot. Now over to you, Azhar. Thank you very much, Taskin ma'am. And indeed, that another live testimony in front of all of us further is strengthened the beliefs and as well as the objectives with which NEIA had established. And in order to explain more about our mission and our objectives, I would like to invite Mr. Javed Mirza Saab, who is the you can say who is the spine of our entire NEIA. Okay, and he is the founder of NEIA and as well as current founder president. So he is very much motivated and as well as very dynamic personality who has brought together all of us from different parts of the world. And and his quest towards making this NEIA reach out to the corners of our country is very incredible. With these few words, I would like to invite Mr. Javed Mirza Saab. जी अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, it is indeed a pleasure for me to be here amidst all of you. The thing that has been motivating us all along is the need for bringing transformative education. So transformative is the key word. How do we change in every way? How do we make education disruptive? And in this context, we were lucky to have associates with us with whom we were able to do a lot of brainstorming and come up with the idea of pedagogy, of technology, and combine the two together, make it a blended learning model, and being able to connect to so many other schools and secondary institutions where we are able to provide this education here. So this is all a evolutionary process. This is not a ready-made formula, and we need to improvise every day. We see that today also that things need to be improvised. But I'm so glad that we were able to connect with people from Karnataka last month, and the intent behind this was to ensure that the people of Karnataka understand us more, and also to seek their own opinion and understand what they are doing. So I would be very happy to see our friends from Karnataka speak now. Thank you. Thank you very much, Javed Saab. Indeed, we understand your encouragement that this larger meeting was to our Karnataka audience, but again, not limited to. Without further ado, I would like to invite our one of the important speaker of our event, Mr. Tahsin Ahmad Saab. Okay, a small few words of Tahsin Ahmad Saab I would like to state here. He is a well-known figure amongst this Bangalore circle and as well as Karnataka circle. And look, he was a bureaucrat earlier, working in the government of Karnataka, and he has served in various positions in administrative services of Karnataka from past several decades. He was once upon a time the Tahsildar of many of the taluks in Karnataka. Subsequently, he became the Deputy Secretary of the Irrigation Department, and as well as he was a CEO of Sanjay Gandhi Hospital. And also very importantly, where his services was largely benefited to the people of Karnataka is when he became the CEO of Karnataka Work Board and as well as subsequently Secretary to the Minority Commission.
And very importantly, before he retired, he was the additional director of horticultural department, particularly in the heart of the city of Bangalore in Lal Bagh. And more than that, where our Tahsin Ahmad Saab's ingenuity comes into play is that where he writes, his amazing anecdotes and as well as amazing articles in many of the bi-monthly journals as well as monthly journals circulated in Bangalore. And he is also associated with quite many of the organizations, and as well as NGO movements in Karnataka. And he is part of many of the societies who focus on education. And currently also after his retirement also he is serving his services in this great accord. So with these few words, I would like to invite Mr. Syed Tahsin Ahmad Saab to provide his perspectives in this regard. Thank you, Azhar Khan Sahib. I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Very much. You have spoken more than what I deserve. Yeah. Actually, I would be speaking more of general related to education itself, but a bit more general in the sense that it is not directly connected with the activities of NEIEA. Yeah, but I will relate it to NEIEA, what important functions you are doing, how it is useful. So I'm thankful to Mr. NEIEA and Mr. Javed Mirza for giving me this opportunity. Yeah. At the outset, let me point out that there is a lot of data available about the status of education of Muslim children and also figures on their dropouts at primary, secondary, and higher secondary level. We have the Rajendra Sachar Committee Report 2006, Justice Ranganath Mishra Commission Report 2007, Post Sachar Evaluation Committee Report of Professor Amitabh Kundu Committee 2014, India 2047 by Empower India Foundation. Many organizations are working at the primary, secondary, and higher secondary level. Therefore, I would like to focus on the aspect of Muslims in higher education. By higher education, I mean education at the university level, which is a university level, which is a stepping stone for career advancement and economic upliftment. The Ministry of Education, Government of India, has recently released the report of the All India Survey on Higher Education, that is AISHE, for the year 2021, 2022. The report has data collected from 1019 universities, 39,955 colleges, and 9,599 standalone institutions. The report also points out certain information relating to the Muslim community in an exclusive way. The data shows that the enrollment of Muslim students in higher education is 21.08 lakhs, 21.08 lakhs, which is just 4.87% out of the total enrollment in the country. This 4.87% is much below the percentage population of Muslims in India, which is 14.2%. Although the Muslim students' enrollment has increased from 19.22 lakhs in 2020-21 to 21.08 lakhs in 2021-22, yet the percentage to the total enrollment has fallen from 5.5% in the year 2019-20 to
to 4.87% in the year 2021-22. As per the AISHE report, enrollment of Muslim students in the institutes of national importance like IIT, IIM, All India Institute of Medical Sciences, Indian Statistical Institute, National Institute of Design, etc. is merely 1.9%. And Muslims are at the bottom here by a long margin. Why is this so? One reason could be this. The AISHE survey itself reveals that 77.63% of the Muslims in higher education are enrolled in colleges whose quality of education raises many questions. You know, the quality of education in most of these colleges is below par, and our students are studying there, majority of them. Therefore, there is a need to enhance the participation of Muslims in mainstream higher educational institutions. This malady also exists at the lower levels of education. The participation of Muslim students in prestigious schools like the Jawaharlal Nehru Navodaya Vidyalayas, Kendriya Vidyalayas, and central schools is abysmally poor. Let us take a closer look at this. The share of Muslim students enrolled in JNV is just 4%. The UDISE data reveals underrepresentation of Muslim students in Kendriya Vidyalayas too. It is just 4% here. So this is where NEIEA comes in. You know, they are trying to improve the quality of education at the lower levels, secondary level, senior secondary level, primary level, like that. Getting back to the AISHE report, the AISHE report also sheds light on the number of teachers employed from the Muslim minority group. The total number of Muslim teachers employed is 89,770, which is 5.6% of the total number of teachers. Again, way behind our percentage population. One significant finding from the data is the faster increase in the percentage of female Muslim students enrolling in higher education as compared to their male counterparts. Among the Muslim minority students, 50.7% are males and 49.3% are females. This trend indicates a growing interest and determination among girl students to pursue higher education. This also showcases the positive impact of efforts to promote gender equality and inclusivity in the education system. For instance, in Bangalore city, there are many community-run colleges only for women. To name a few, there is Hasnath College, there is Abbas Khan College, and there is BET College. So this also exposes the fact that boys are now lagging behind girls at many levels of education. With more girls completing higher education, social issues have cropped up in the matrimonial field. Girls with higher educational qualification are finding it increasingly difficult to get a spouse matching their educational attainment. However, this should not be a deterrent, since Muslim girls pursuing higher education in significant numbers signals increasing gender equality. To conclude, the following suggestions are given which will help increase
enrollment in higher education. Number one, 12 years of quality schooling for Muslim students should be our focus. Number two, prioritize the enrollment of the vast poor and lower middle class and disadvantaged students with liberal scholarships. Rupees 1,000 and rupees 2,000 scholarship distributed by Muslim organizations is just a token assistance. Number three, increase proportional share in all streams of higher education. In higher stream, you have arts, commerce, science, paramedical courses, so many things. So engineering, medical, of course, is always there. So in a proportional share should be there, should be increased in all such streams. Number four, ensure quality of education in Muslim managed schools and colleges in terms of teaching staff, infrastructure, and methodology. Number five, establish institutional support systems to monitor and provide guidelines to improve the educational standards of our colleges so that they can compete with the best of educational institutions managed by other communities. Number six, the Muslim community should spread awareness about the need and importance of higher education as a key to their progress and upliftment. Lastly, Muslim students should be motivated to pursue higher education in mainstream premier higher educational institutions and aim at higher targets by participating in the relevant competitive entrance examinations. So I conclude my talk with thanks for sharing my thoughts with all of you. A very light gathering here, and I was very happy till now listening to all the activities of NEIEA, how you have a very dedicated band of workers who are, sparing no end to meet the objectives, utilizing the latest technology, and you have the right guidance, right support, right motivation, and with all these qualities, NEIEA will go ahead, will reach far. It will, it will be one of the biggest success stories of Indian education system. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for that wonderful, presentation. So we got the insights of the, the role of Muslims in the education system. Thank you so much. Now I would like to invite Miss Sarwat Adil Khan, ma'am. She's dealing, she's basically from Bangalore, dealing with slum students. Over to you, ma'am. Sarwat, ma'am. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here. Are you there, ma'am? No, ma'am, she is not there. Maybe she will join back. Well, let us move with the next participant. Dr. Salahuddin Sahab is here with us. He can also share, his thought. Salahuddin Sahab. Is he there? Salahuddin Sahab, are you with us? I believe ma'am has joined back.
Yes. She's Yes, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yes, ma'am. Yeah, actually, I don't know, somehow, some default I got out. So, quick introduction about me is I'm Sarwat Adil Khan from Learning Point Foundation, working in DJ Hurley area from past 5 years. A short term, I want to share my experience working on NIOS dropout students. So, Alhamdulillah, I started up with this program. Actually, I had a interest on working on employment. Why are people not employed? So I started with that initiative where we started up with training soft skills like English communication skills and computer skills, where we used to get so many students, but without 10th and 12th. So then again, somehow we got to know about NIOS, and Startup Me 2019, I had got 6 students. With 6 students, we initiated this curriculum with us and started training those 6 students. And mashallah, those 6 students are into higher degrees now. In that, there were two mothers, single mothers, and 2 of madrasa students. And this one next batch we had 65 students, and immediately next batch we had 150 students. So I was like, acha, this is need of hour now, this is what is required in our community. So let us just get into it. Yes, too many oppositions came, madrasa students, so this is required, all these things and all came into my place. But still, many madrasas, principals and teachers were my first students who started up learning English. So first 3 months, we just, let me tell something about our academics also. First 3 months, we planned them to give the basic English. We use Cambridge curriculum, YLE programs, so that the basics may let them come first. After that, we give them an hours. But what the 4 years of experience tells me, somehow now the things are changing. People want to change. The thing is, they required some platforms where they required proper guidance and support, and they are coming forward. I have mothers, I have people who are 35 years, 40 years coming and sitting and learning basic English, startup from the sounds of letter and this one. So somewhere, that's the reason I think we are successful in this project, getting 96% of results every year. Last year, 76% of students had been to further studies, tried to push them to further studies. What we do is, after 10th and 12th, we do have 12th, but after 10th itself, we try level best to push them to for regular colleges, regular system of education where they can join the government. It might be government college, it might be a private college, support them with the scholarship, follow up them till they are employed. That's how we are working here as an institution here. Yes, we do have online and offline, both we are working. Online experience with girls is mashallah very good, but online experience with boys is not that good. So, and even the madrasas which are associated with us, now currently we are working in 6 madrasas where you do your curriculum. We are not disturbing you in your curriculum. Give us 3 hours a day. In that 3 hours, our trainers go there to madrasas, train those students, and then come back. And within a year, alhamdulillah, we are getting very good results. And I'm really glad to see that they are moving forward for their further studies. That's a very big, this one achievement. I can tell you that we have got this one. Surely, I'm not able to, as NEIEA has this thing to, you are as your online platform and this one. Surely you can take it to a large scale, but requirement is too high. I am not a single person who can who can touch to that requirement. Surely we require platform like NEIEA, where these people who are at least able to get in would join and would join and get the benefit of that. But I didn't know that it is even for those secondary level and the lower level. Today I got to know about it. Thanks for that, Ms. Taskin, for joining me today and giving me this opportunity. Anybody has any questions, can you ask me? That is a wonderful initiative you are working. Is it only in Bangalore, ma'am? Yeah, we are only in Bangalore. Students we have from Tumkur.
गाड़ी बस स्टैंड में बोले ना Hubli, तो लेके Dharwad, क्या बना other places also. But currently we are working in Bangalore. So our center is in slums of Tanri. We are in Tanri Road, which is Dichehalli and KG Our target area is totally the slum where I want the students to come out and move out further. The amazing thing is children, mothers come with their children, sit, learn, study, and moving forward for their jobs. That's a very good thing which I see within these mothers and the people who are dedicated. Yes, we require too many platforms for the guidance, for the scholarships, as Tahsin sir told, we require too many, guidance actually, hand-holding things for our community and to, bring up education into another level. Ms. Tasneem, do you want to ask something? Ma'am, you said you were using Cambridge YLE, right? The Yes. program. Yes. For the developing their initial language skills, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isn't that going to be a little of a challenge because No, first, it seems like directly we, instead of first before Cambridge Wiley books, start up with sounds of letter. Even if he is 30-year-old, no matter, start up with sounds of letter. Once they start reading, because one level up we need to take them, because within 2 months I need to give them NIOS books, hand over NIOS books to learn. So thoda sa pressure, according to their age, they'll be able to handle it. So we give that. And we don't work on a student who is more than 15 years. It's only for the students who are lesser than 15 years. We are working only for the students who are 15 plus. Congratulations for that, ma'am. We would like to help you in that initiative in any possible ways. So do let us know if we can help, and we Surely. also wanted to take your help in this as well. Thank you so much. Surely. If at all, if you people allow 2 minutes, can I take one? I think someone has some question. Can you ask? Yes, yes. If somebody has any question to ask to Ms. Sarwat Adil Khan, ma'am, you can go ahead and ask. हेलो Yes. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी आप तुम्हें बोले ना वो सब बहुत अच्छा दिखा. यहाँ भी एक स्लम है, बहुत बच्चे ही, हमें भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करना तो क्या 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 हमें ये सर्वे सभी कर को ही इसके बारे में. कौन सा एरिया है? केआरपुरम डीजे हल्ली है नहीं. केआरपुरम से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास. इंशाल्लाह, surely you can take my contact, inshallah, from Tasneem ma'am and Taskeen ma'am, and inshallah, surely we can. Brother, we are here to work together to bring out results in our community. So something which I can do, I'll never tell no, inshallah. Sir, please share your contact number over here. I'll pass that contact number to Miss Sarwat ma'am. Otherwise, I'll give you Miss Sarwat ma'am's number. Okay. And here, when everybody are sharing your experience, one of my trainer want to share her experience. If you would allow her for 3 minutes, she would be sharing her experience. Nusrat. Am I permitted? Can I go on? Yes, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving me the ability to help someone in need. Secondly, I thank Ms. Sarwat Adil Khan and the team NEIEA for giving me the opportunity to represent all the trainers at Learning Point. I am Nusrat Nouraisha. It's been more than 1 year for me at Learning Point. Learning Point, the crowd is very different from the regular schools and colleges because the students that we target have no basic knowledge. We start from the scratch, like we teach them from ABCD. They have never seen schools. Some have been dropped from their schools. So it gives me immense happiness when I see them reading big alphabets from the textbooks, communicating in English, and also now I see the students whom we have trained from past 1 year or 2 years aspiring for competitive exams. And some students who are working, we teach them at different times. We teach online for students who cannot attend offline classes, and we also visit madrasas for especially girls madrasas and give them formal education along with the madrasa syllabus.
And I think NIOS is one of the best syllabus for these category of students as it gives all the learning material at their website, and there's no age barrier. If we see in state board, there is regional language which is mandatory, and mathematics is tough, so most of them drop. So through NIOS, they get an option to choose the subject which are easy. Talking about the management at Learning Point, it's really great. People out there talk about women empowerment, but Sarvat ma'am, she don't preach about it. She's proven it because 90% of my colleagues are female. The employees, we are very dedicated towards her project. It's not just a job for us. We connect to them, we understand, we counsel the student, and we become more like a friend, so that in any possible way we want them to be educated. It's very challenging, but it gives me a sense of happiness at the end of the day, that I am kind of contributing little bit towards my society and bringing the youngsters of my community to a bigger position from where they belong to. So I just want to conclude by saying, may Allah accept from all of us. Thank you and best of luck, Team NEIA. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Nusrat. Yeah, thank you, Mr. Skin. Thanks a lot for your understandings. Thank you. Thank you so much, ma'am. We have Dr. Saeed here. Maybe you should ask Dr. Saeed to speak to. Saeed sir, are you there with us? And Dr. Salahuddin Saab is also here with us. Yeah, Dr. Saeed sir is here. Okay. Saeed Saab? Sir, can you hear us? I don't think so. Okay. Somebody is joining. Okay. Zulkhanan sir is also here with us, right? Yeah. We should hear from Zulkhanan bhai. Assalamu alaikum, sir. I am here to listen only, not to speak. Good session. Are you watching some of the part of it, not all? It's going on very well. And Jazakallah khair for all the team members. Mashallah. Hope to see some of you, inshallah, or maybe on Monday. Inshallah, sir. Inshallah. Apart from that, if somebody wants to share their experience about, about their organization. Walaikum assalam. Yeah, this is Azim Aziz. Yeah, I would like to introduce about my organization. So I'm a social worker and activist from past 15 years. I come from a background like I'm into these NGOs. I'm into education, employment, and hospital medical services from past 10-15 years. So recently, when we had an issue with the hijab thing, so me and my colleague, Advocate Lubna Afza, who's in the Zoom meeting, who has joined today, we came up with a campaign for these girls, students, and madrasa children. Because I have had a background of adopting government schools and providing them education, quality education. There is a school in Khalasi Palyam which we have adopted, and we are running it successfully from past 6 years. It was like a den before, but now it is like it's better than a private school, I can say. I used to take free classes for computers, English, and we used to run smart classes also. So having that in mind, I had an idea on how we could go ahead and train or take a task in hand for teaching these madrasa students the formal education. So we started from a madrasa, and then we had around 120 to 150 students
to whom me and my colleague Advocate Lubna Afza used to go to the madrasa physically. And during the night, from 9 p.m. to 10:30 p.m., we used to take classes there. And we were taking English, Kannada, Hindi, and Maths. These were the 4 subjects we used to concentrate. And we used to teach them all the basics. So for these madrasa children, we had a planned course wherein we train them a year or 2 completely on basics, until and unless they get the hold, that they have that hold to understand, recognize letters, read and write, and then speak. So that was our idea. So we also had an opportunity wherein we could take over a organization. Our English school, it was established in 1965. So we had an opportunity to take over that school license. And currently we are in Jayanagar 9th block. We have set up a school here, which is still the infrastructure work is going on. So we are planning to collaborate with such organizations who are there to provide free education in terms of digitally or physically, and train the teachers as well. So we basically work on madrasa students. There are a few orphanage madrasas wherein there is a need for them for the free education, because we were bearing all the costs from our salaries. I work for an NGO for a cancer organization. So, and Advocate Lubna, whatever she does from her consultations, used to use our salaries in paying the teachers or getting the materials, whatever the costs that are coming up, we are using our salaries on that. But now, as we are having such organization as NEIEA, who are already there, and they are instrumental in providing such kind of education, we'll be happy to collaborate and join along with you, and we can explore many other madrasas and slums, irrespective of caste, creed, and religion. I'll be more glad to have another meeting with you guys so that we can discuss in brief and explore more opportunities for these madrasa students. Jazakallah. Thank you so much, sir. We will be, I'll arrange one meeting for that. Thank you so much for sharing your work also. So I can see many other participants also raising their hand. Rizwan Jamadar Sahab. Assalamu alaikum, sir. Yeah, I'm Rizwan from Belgaum, Karnataka. Yeah, yes. We have an NGO, Athletes Welfare and Education Society. Actually, we are a team of software professional and management professionals. We are working in the edutech industry since last 6 to 7 years, and we are providing edutech to the prestigious to our area. Recently, we have started AI-based evaluation concept with Muslim NGOs around across India, and from past 3 to 4 months, we have reached to more than 30 to 40 cities, alhamdulillah. And we are हम चाहते हैं कि मतलब ये जितने भी NGOs हैं राइट नाउ हम लोग एक NGO की मीटिंग करें एक महाराष्ट्र की एक जगह पे तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी NGOs हैं मुस्लिम NGOs इस कॉन्सेप्ट को NGOs के थ्रू करें तो काफी इससे पहले भी शायद NEIEA की कुछ लोगों से बात हुई थी लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाई मैं चाहता हूँ कि कुछ मेरे अगर वक्त दिया जाए कभी तो इंशाल्लाह हम लोग बैठ के बात करके और जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि इसमें भी हम कुछ टेक्नोलॉजी की बहुत सारी कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है आप यहाँ पे बोलने के लिए इसलिए मैं इतनी बात बोल के तो फर्दर डिस्कशन के लिए मुझे क्या करना होगा किससे कांटेक्ट करना होगा We are sharing our numbers over here. Danish Ali, our supervisor, I'm sharing my number, and I already shared messages. Yeah, you may also share your number and the email address, like Mr. Aziz and Rizwan Jamadar Shahab. Like, I will request both of you to please share your contact number along with your email address. We will definitely get in touch with you, and we will organize a Zoom meeting, and we will discuss it further. Inshallah. Yes, thank you, sir. I'm sharing my number. You can take down my number and Taskeen ma'am's number, right? You can definitely go ahead and talk in another meeting.
Inshallah. Thank you. Jazakallah. Sure, I have already shared it. Thank you, sir. Jazakallah. So now, I think we have one more guest with us, Mr. Sami Siddiqui Saab. Are you there with us, sir? Sami Siddiqui Saab. Taskeen, I think you should just open it up for the whole audience. Let anybody ask any questions. Have a Q&A. Please, if anybody have any kind of question, please pose. You can, unmute yourself and it will be good if you can display all the courses which you are offering on a screen. okay, I'm doing. Yeah, and we are open for question and answers. Anyone who has any question or any doubt, they can come forward and ask. There is a query in the chat box. I can see. Is DOP learning created for NEOS only or any other state boards, and for which classes is it done? This query is from Khalif Abdul. देखिए DOP जो है, DOP is a pedagogy, वो एक पढ़ाने का तरीका है, वो कि सिर्फ NEOS के लिए नहीं है. Right from the primary classes we apply DOP in all the courses which we are offering. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम NIOS की classes offer कर रहे हैं. अभी आपने जिन बच्चों को क्लास में देखा था, they are there, right? So वो अलग बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, और we have TOS classes also. So we are giving them classes with discourse oriented pedagogy. So discourse oriented pedagogy may, like, we post questions and we elicit answers from the learners, right? So ये सिर्फ NIOS के लिए नहीं है. Can you elaborate on DOP more? Sure, sir. Abdul Sure. Khalid. Yeah. Yeah, thank you. Sir, DOP is a method which we deliver all our courses, right, using the technique of posing questions and eliciting answers from the learners itself. We take help with the visuals, with the pictures, and along with visuals and pictures, we design our courses in such a way where we are including activities, group discussion. We are also giving them quizzes, and from time to time we are taking assessments with multiple exams, through exams, and then once we have the assessment, we are trying to analyze that where we need to focus more, and according to that we are delivering our lessons. So you mean it is not specific to any board or any No, NIOS? no, not So at all. Not at all. just you will be doing these things generically. So if the student is in first 2 to 4 class, if you are doing some math foundation, then you will be doing generic things that are required for those grades. You mean that only, right? Right. The course will be the same, which we teach to the learners from 1st to 4th grade, but the method of delivering lessons, right, that is different. That's a little different. And we do have our maths teacher, Tasneem Khan ji, who has raised her hand. Let's see what she want to say. It's actually not generic, but the thing is, because the students from our this thing are generally marginalized, and we have adopted OBE the study material for the foundational classes. In that particular, if you see the NIOS OBE material, you will be able to clearly see that it spans a lot of classes, and it brings the ability in a student to address grade 4. So foundational, we have used OBE material. For grade 5 to 7, we use we do develop. If you see our PPTs, you will see that we span the classes. It's like we have even if a student is in grade 5,
we try to help him out. And most of our students generally join from different classrooms, different classes also, because there is some learning gap somewhere. They must have missed out on some class or the other. This helps them to get through to a particular level. If I'm teaching, even despite the fact that in foundational, I'm teaching grade 7 textbook, but I will start at the time when I start the class or start that particular chapter, I will teach them what was there in 5, 6, and then come to 7. So that way we bridge the gap for the students, at least for math. Okay, understood. Yes, any other question which we have? Danish sir, Yes, sir. Good evening. This is Salahuddin Sayyed. First, I would like to congratulate the team NEIEA for such a wonderful job, क्योंकि इतना आसान नहीं है महदूद वसाइल और इतनी मुश्किलात के बावजूद इन सब तक पहुंचना और इन्हें बताना कि वसाइल का ना होना और मुश्किलात का होना आपके ना सीखने के दरमियान कोई दीवार ना बने, बल्कि टेक्नोलॉजी और आपको सिर्फ कनेक्ट करने की वजह से आप अपने घर बैठे भी दुनिया की बेहतरीन तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा और कई उमूर पे बात रही कि खुसूसन जैसे तहसीन अहमद साहब की बात, उन्होंने मतलब बेहतरीन रिसर्च और खुसूसन हायर लेवल रिसर्च स्टडीज़ में जहाँ पे ड्रॉप आउट्स हैं, कई मसाइल का इन्होंने जिक्र किया और क्या हमें करना चाहिए इस पे भी बहुत अच्छी बात की। और अजीम साहब ने भी और आपकी खुद टीम निया ने भी, और ये टेस्टिमनी है आपके बच्चों ने जो बात की और बताई कि हमें ख़तयन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बिकॉज थिंग्स विल कम एंड गो। आप हिस्टोरिकली देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री उठा करके हर दौर में हर कौम को मुश्किलात रहीं और एक कौम वो रही जो मुश्किलात पे रोती रही, मरसिये पढ़ते रही, वैनिश हो गई, और एक वो कौम है जिन्होंने अपने मुश्किलात को बैठा, देखा करीब से कि क्या वजूहात हैं, हमें मुश्किलात आती हैं, रास्ते इख्तियार की और फिर तरक्की की। तो जिसकी एक जापान हमारे आगे मिसाल है, हिरोशिमा नागासाकी के बाद अगर जापान का तसव्वुर एग्जिस्टेंस भी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया और फिर देखिए आज दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक में सफ़े अव्वल में। तो हमें ख़तई नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमें कोशिशें रखनी चाहिए। वी शुड कोऑपरेट, कोलैबोरेट एंड डू इट इन हाइब्रिड मोड। और हमारा अप्रोच जो होना चाहिए नीड बेस अप्रोच हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये फला यूएस के लिए बेहतर हो तो यहाँ के लिए भी, क्योंकि वहाँ के हालात और यहाँ के हालात में बहुत फ़र्क है। तो आई अप्रिशिएट निया going throughout India, looking at very basic place and doing your job. I wish you all the best. I wish you all the best in your future endeavors. और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा कुछ करने की तौफीक अता करे, क्योंकि आप जिस लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें दुनिया के साथ कदम मिलाने में बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन आई एम श्योर विद दिस वी कैन डू इट इंशाअल्लाह। द डे इज़ नॉट फार when people like you come forward and be with them and put them on driving seat, not just on pillow or on rider. Normal technical education वही होता है, टीचर आया, अपनी नॉलेज, अमाउंट ऑफ फॉर्म्स, अमाउंट ऑफ कुछ चीज़ें बता दी और वो ट्रांसफर कर दिए, जाके एग्जाम में लिख दिए, कामयाब हो गए। दैट्स नॉट द वे। वी शुड allow him to use his God-given capabilities at maximum to understand the concept, get the concept, and do utilize that concept and that education, whatever he get in the class, outside of the class, to understand the world issues and resolve it. Thank you. With this word, I'm sorry I'm a bit long, but I really appreciate. Thanks a lot. Salahuddin Bhai, thank you so much for coming in and then joining the talk here. You know, a valid point that you did mention was the implementation part of anything. You know, Tahsin Bhai has made a lot of very good recommendations, but what is the vehicle for implementation of those recommendations? And how do you bring that, how do you make that possible? That is a key question. You know, recommendations are important, but without
creating that vehicle for implementation of the recommendations, then the talk is just a talk. We've got to keep that in mind. How do we do this? That's true. That's the reason I'm telling. The biggest part is to connect the people and get the people, those who already work at the ground level, but due to lack of facilities, one and another, they were lagging behind. So join with them and start with very basic level you started and connect them. Like this kind of talks, for example, mostly from Karnataka, very few from other states, but state to state, and have a database. And afterwards, have a blueprint, where to start, how to start, discussing and giving figures, and that anyone can do, because you already have an experience how to take this to the level 0 and start from scratch. So it's the same thing. Like many people are trying to do their level best, but due to one reason, like not best in technology or technical support, they're not sustainable systems. So we have to look around, we have to sit down, and people have to come forward and join and think, means where to start, and start with small prototype. Like very big problem, even if someone solve the biggest issue in sciences, they sit down and they do it in laboratory scale, milligram scale, then eventually that will go to metric ton. But there is a way, from where to where. So I appreciate, means I'm happy to be with you, and I'll be happy to join hands, and there are many people like that. So like-minded people should come forward, spend some time, and start from where we really need to do. Then later on expand ourselves. Thank you. Thank you so much, Salahuddin sir. Any other question? If we have, questions, we'll take. Otherwise, we'll move to vote of thanks. हेलो Hello, yes. हेलो जी हम Yes. सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। जी जी हमें आके जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या भी करते हैं, वो पूरा क्या करते हैं, हम मस्जिद के थ्रू अनाउंस कर डालते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल सीटी, नीट, के सेट, और वो मस्जिद के थ्रू अनाउंस करके वो लोगों को हमें पूरा बताते हैं कैसा होता है करके, एक एनजीओ से। फॉर एग्जांपल रेशन कार्ड, बाद में आके वोटर आईडी कार्ड कैंप, ये सब भी बहुत ज़रूरत है आदमी लोग को बनाने के लिए। कैसा बनाना है, क्या करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करना है, इसके बारे में जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में हमारी एक एनजीओ हो, उससे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और वो जो भी स्कीम आती है, गवर्नमेंट की हो, ये स्टूडेंट्स की हो, एजुकेशन की हो, वो मस्जिदों में अनाउंस कराते हैं कि लोगों को पता चले कि ये स्कीम आई है करके। So, is it for Karnataka only? यस कर्नाटक। ओके, आपका नंबर शेयर करिए सर, हमारे भी जो ऑडियंस होगी कर्नाटका की, इंशाल्लाह हम भी उसको व्हाट्सएप के थ्रू जिस तरीके से हो सके उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। I have shared my number. I am also from Karnataka. If you need any kind of help and you can announce something, so I will be there. और मजर साहब, आप अपने जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनमें आप हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं। You can tell them that कोई स्कीम नहीं है, मगर यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रही है, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और एक आदमी को चाहिए क्या, एक मोबाइल चाहिए। आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है, राइट? तो वो मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कम्युनिटी कोई अगर क्लास सेटअप कर सके वहां पर, राइट, कोई एक बड़ी जगह पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अभी फरा मैम ने आपको बताया था, वो अगर लग जाए वहां पे, तो मतलब 100 बच्चों को आप वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके ओके ओके, और वो भी फ्री में। ओके 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 ओके, थैंक यू। Thank you, Mazhar sir. Anyone else? Ma'am, I have a question. Yes. Do you give education only for groups or then for individuals? Supposing some children, they are poor in business studies or economics, can they contact you for the classes? Currently, we are, business studies for NEOS, NIOS.
No, ma'am. It's in for PUC first year. So currently now we are focusing on, basics, foundation. For your first question, we are offering our courses to individuals as well as groups also, institutions also, right? Individual can join us with their devices, and institution can have infrastructure installed, and then they can take our services. But as of now, the courses which we are offering are from primary level till secondary level, right? We will definitely come up with in future if you people will support us, and in future we will inshallah come up with higher courses also. But as of now, we are providing classes till secondary. We have, English proficiency classes plus a technical course for adults. Right. Right. Technical Graduate- courses. Yeah. Technical courses anyone can avail. Avail. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Jazakallah khair. Thank you. Let us take one more question. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I am audible. Yes, you are audible. Walaikum assalam. Yeah. Okay. Thank you so much to NEIA organization and the entire team of the NEIA. And I'm very happy and very fortunate that I came to know about this wonderful job doing organization recently here. So my question is only one thing that I heard today so many things about education, providing education to the poor people and the or the students who are not aware of education from the basic to the advanced level. So my question is that is NEIA is providing services or offering courses to the students to the technical skills like in the field of data, data analytics, data science, or data engineering, or the artificial intelligence or machine learning courses like this, because these courses are in demand from so many companies, not only from India but also from out of India. So if the NEIA is already planned or that is the part of planning, so because I don't know so many things about the courses offered by NEIA. So this is my question. Thank you very much, Furqan Ghanisab, for showing the interest. As of now, as we just told you that we are offering technical course where we are enabling the learners with the knowledge of computers like Google Sheets, Google Docs, Excel, Word, and Google Docs. However, the other skill courses, we do have the plannings, right? We will be coming up with skill courses, skill development courses. So in future, definitely we will come up with those courses also. Thank you so much. Yeah, Arzu Siraj is like the person who is handling the technical course. Arzu, could you please tell us something about your course? Yes, sir. Thank you so much. In this course, basically, the technical training we are providing on Google Workspace, and that course we include the 7 modules, that is Google Meet, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, and Google Form, and Google Classroom. And as you said, for data engineering, machine learning, we don't have these course now, but we are starting from very initial level, very beginner level. So hopefully in future we will start developing content for these courses, but for now we have only technical training for Google Workspace. My question, one more question here. These courses, these technical skills regarding Google Docs, Google Meet, or any this kind of tools and application, that is only because of so that the students who are learning from online courses can be able to handle this kind of application, or they are doing something different after learning these courses like Google Docs and Google application like this. So basically the students, we have our teachers, the school students. So and they are learning from it, and as of now they are conducting their own classes online. So they are using these modules in that.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for showing your interest, and we will definitely come up with other skill development courses. Any other question which we have? Okay, so now we'll move ahead with vote of thanks. I would like to invite Ms. Nasreen, our senior mentor from Tamil Nadu, to, vote of thanks. Thank you for giving me an opportunity, ma'am. Am I audible? Yes. Thank you. A warm and graceful evening to our guests of honors, directors, supporters, dear friends, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this event possible. I, Nasreen Banu, on behalf of NEIA and the entire fraternity of the institution, extend my sincere thanks to the Almighty for making today's event a success. It's my honor to extend a heartfelt vote of thanks to our guests of honors who spared their valuable time from their busy schedule. Today, we also had an opportunity to hear your thoughts. Your richness of thoughts and experience will surely encourage us in our future endeavors and serve to be a guiding light for us. We are a new organization, and our mission has a gigantic goal of building a transformative education and ensuring that every child in India, and if possible, globally, will benefit from a model of education that provides free learning using the powerful DOB tools and the latest technology. Our effort to build an efficient, inclusive, and equitable learning center. We share together the responsibility and the hope of building a loving welfare state that stands for peace and happiness. I take a great pleasure in thanking our motivated dynamic directors and also our respected president, Dr. Javed Mirza sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best. I'm gratified to all the students, to all the audience for coming here and bless us with your presence. Last but not the least, a big thank you to each one of you who made this moment memorable. We thank you for being with us. It has been a pronounced pleasure. Have a great day ahead. Thank you. Thank you, everybody, for joining. Thank you, Ms. Nasreen. Thank you, madam. Thank you very much.